something from my learnings at IFFI. So I really encourage all the young filmmakers who wants to make movies or young actors who wants to come and understand how the the journey happens. So you have this place called as IFFI Goa. इफ्फी फिल्म और संस्कृति के बड़े बड़े दिग्गजों को एक मंच पर लाने का शानदार आयोजन है। मुझे तो यहाँ पे ढेर सारी मूवीज़ देखनी है, पहले उसके बारे में समझना है, जो डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है, उनसे मिलना है, उनके एक्सपीरियंस जानने हैं कि कैसे उन्होंने मूवीज़ में काम किया, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और हम जैसे एक्टर्स है वो क्या सीख पाए इससे, ये सब चीज़ें जाननी है। दिन रही मास्टर क्लासेस जो होने वाली है, वहाँ से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने पूरे ये 8 डेज़ इसके लिए डेडिकेटेड किए हुए हैं ताकि मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले और मैं जो आई एम एन एक्टर, सो मैं उसको अप्लाई कर सकूँ अपने लाइफ में और अपने स्क्रीन पे और अपने स्टेज पे। Independent films are actually increasing in India, which is really revolutionizing the film industry. So it's really good, and I am really fortunate to come here. इस वर्ष 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। معقد لما في اكتئاب بطلع من عندك يأسان على الآخر. كل اللي عم تحكيه طبيعي. Alma Mahler was part of the Viennese bourgeoisie at the beginning of the 20th century. She was a composer that was known for her irresistible charm and her free spirit. She married in 1902 Gustav Mahler, another composer who stopped her from composing. She then had an affair with Walter Gropius, and after her husband died in 1911, she married him in 1915. Aquí debemos estar. Vamos a pasar un día estupendo. Oye, ¿y dónde cazaremos? Ya estás deseando pegar tiros, chique. Aquí murió mucha gente. A montones murieron aquí. Y ahora solo quedan los agujeros. Buen lugar para matar. Para el buen cazador. Estás loco, Julián. Todos tenemos nuestras manías. Las mujeres tienen que ser delgadas, efémicas. Por eso hay que hacer ejercicio antes. Pues eso es lo que debe ser una mujer moderna. ¿Te hubieras casado conmigo? To jest losowy ciąg Fibonacciego. Jego losowość zasadza się na tym, że za każdym razem możemy rzucić monetą. I jeśli wypadnie orzeł, to dodajemy, a jeśli wypadnie reszka, to odejmujemy. నంది ముందు రంగు మార్చిన పంది కారు కూతలకు వస్తే కపాలం పగిలిపోతే ఇచ్చారు కన్నా ఇటుకాని అప్పుడు చూసుకో ఊరంతా కరెంట్ వేపించేసే ఓ 3-4 బోర్లు వేపించేసి పొలాలకు పంప్ సెట్లు వేపించేస్తాం படுத்து அதுவும் இங்கிலீஷ் டீச்சர் சொல்லல. இப்ப எத்தனை நாள் எனக்கு 4 தள்ளி ஒரு மேசாமு 13 நாள். நாம இப்ப என்னாலே பண்ணுங்க எனக்கு படிக்கணும். யோசிக்க வேண்டாம், அதே பரிகாரம் கேட்கணும். தப்பு பண்ணவனோடதே ஜீவிக்கணும், அதுதான் ஊரு நாயா. இச்சப்பதி மேலேதி ஒரு வைத்தியரமா இருக்கா, நாகே வந்து பேருந்தாரு. பிள்ளைன்னு அழிக்காதிருந்து எல்லா மருந்துமே கொடுப்பான். അതിലെങ്കി വരിക വരിക സാധനം ശരിയല്ല.
ठाण्यात दरबार भरतो म्हणे तुमचा. प्रति न्यायालय म्हणजे न्यायालयात ठरलेले निकाल इकडे येऊन बदलतात. तुझं कोर्ट आहे ना ते पुरावे सादर करा असं सांगतं. माझं कोर्ट आहे ना ते पुरावे जिथे आहेत तिथून शोधून. गोष्टीला आणि गोष्ट ऐकणाऱ्याला वय नसतं. मुळात आपण सतत तात्पर्य सांगत राहतो मुलांना आणि मोठ्यांना सुद्धा. पण जर गोष्ट आवडली तर तात्पर्य आपोआप लक्षात राहतं. आपण वेचत राहायला हव्यात गोष्टी आणि वेचता वेचता आपणच एक पात्र होऊन जातो गोष्टीतलं. मला खात्री आहे कोणताही विषय असो, कुठलाही नाजूक मुद्दा असतो, गोष्टीतून पोचवता येतोच आणि तो कायमचा स्मरणात राहतो. எந்த ஆதாரமும் இல்லாம நம்ம கேஸ போடுறது வெறும் 3 போலீஸ் எதிர்த்து இல்ல, இந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து. நீதி கிடைக்கும் வரை போராடுவோம். कितना डरा था. गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है. You keep running, you keep doing, and the children living with my sickness will see me and do their best in sports. And I will keep running till my last breath. इफ़ी का उद्देश्य फिल्मों, लोगों के बीच प्यार, समझ और बंधुत्व के सहारे उन्हें सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करना है। इस बार भी इंडियन पैनोरमा इफ़ी में बड़ा आकर्षण होने वाला है। इंडियन पैनोरमा की शुरुआत पृथ्वी कोन्नूर की कन्नड़ फिल्म हडी नेलेंटू से होगी। फोन कर प्लीज. जबकि दिव्या कवासजी की द शो मस्ट गो ऑन नॉन फीचर फिल्म सेक्शन को हरी झंडी दिखाएगी। There was so much euphoria to see these old Parsis back, to bring memories back. We had to wait for people to stop clapping. ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की एंट्री पैन नलिन की छेल्लो शो द लास्ट फिल्म शो। और मधुर भंडारकर की इंडिया लॉकडाउन की विशेष स्क्रीनिंग भी की जाएगी। बीमारी है ये, आदमी आदमी को छू नहीं सकता और बिना छुए अपना धंधा चले नहीं। कोरोना के वजह से सोसाइटी वालों ने मेट्स आने जाने पे रोक लगाया है। दिन में वही, अब लॉकडाउन में क्या दिनों रात। इस दौरान इफ़ी में एक बहुत बड़ा आकर्षण वे फिल्में होंगी जिन्होंने कान, बर्लिन, टोरंटो और वेनिस जैसी दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में कई पुरस्कार जीते हैं। कुछ फिल्में ऑस्कर विजेताओं द्वारा निर्देशित या अभिनीत हैं। इस साल की दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता आशा पारेख की 3 फिल्में तीसरी मंजिल, 2 बदन और कटी पतंग आशा पारेख रेट्रोस्पेक्टिव के हिस्से के रूप में प्रदर्शित की जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत की फिल्मों को बढ़ावा देने की पहल के रूप में 5 फीचर और 5 गैर फीचर फिल्में मणिपुरी सिनेमा की स्वर्ण जयंती मनाएंगी। इसमें दूरदर्शन द्वारा निर्मित मणिपुरी फीचर फिल्म इलिसा अमागी महाउ से इसका उद्घाटन किया जाएगा।
75 क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण इस फिल्म महोत्सव का बड़ा आकर्षण है। इसमें आजादी के 75 वर्षों के जश्न के तहत देश भर के 75 युवा फिल्मकारों का चयन किया गया है। उन्हें निश्चित समय में फिल्म बनाकर ज्यूरी के समक्ष रखना है, जो इनकी युवा प्रतिभा की कसौटी को परखेगी। मैं यहाँ 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया में एडिटिंग कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ हूँ एंड मैं अपनी टीम के साथ भोपाल में फिल्म्स बना रहा था और उसमें से एक फ़िल्म यहाँ पे हम लोगों ने सबमिट की थी विच गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। और हम लोग अभी यहाँ पे एक फ़िल्म और बना रहे हैं जो कि हमारी एक असाइनमेंट फ़िल्म है, कंपटीशन फ़िल्म है बेसिकली, एंड दैट्स गोना बी डिसाइडिंग फैक्टर फॉर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइक द करियर अहेड। और यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत सारे लोगों से सोशलाइज करने की, टू मेक कॉन्टैक्ट्स एंड टू लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल। मैं मुंबई में कुछ सालों से काम कर रहा हूँ एज ए स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर एंड आई हैव बीन selected in the 75 creative minds as a screenwriter. Also I have my experience is like I have been part of Bhor. I have co-written and I was associate director in that film. That was part of IFFI Goa. That film was open in IFFI in 2018 and after that I am doing some independent projects and have done some short films and working on few. I am working as an assistant director currently now in Malayalam film industry. So I have done couple of ads as well into commercials. I am looking into. Also, the thing is that I am a platinum winner for 50 hours film challenge organized by India Film Project in 2020. Hello everyone, my name is Veda Vakka and I have been selected in the category of costume design. I have been selected in IFFI and it has been an incredible journey till now. So costumes play a really important role in movies. They really show us different kind of emotions and they depict how a person feels in general. उद्घाटन और समापन समारोह में 14 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इनमें भारतीय फिल्मी हस्तियों के साथ फ्रांस, स्पेन और गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाले संगीत और नृत्य समूह भी होंगे। इफी 2022 जश्न है फिल्मों का, कलाकारों का और उम्मीदों के आकाश में बड़ी उड़ान भरने का। ये भव्य मंच है उन युवा हुनरबाजों का जो आज दिग्गजों को प्रभावित कर आने वाले कल में सुनहरी चमक बिखेर कर भारत का मान सम्मान बढ़ाने को तैयार है और जिनके साथ जुड़कर हर कोई कहना चाहेगा लाइट, कैमरा और एक्शन। Hello everyone, namaskar to all of you. My name is Akshay Maurya and I am with my colleague Shala Nigar, and together we welcome you to the opening ceremony of the first full-fledged International Film Festival of India in the post-pandemic times. बिल्कुल नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में। ये 53वां संस्करण अपने आप में बहुत खास है और पूरी दुनिया की सिनेमाई उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए
गोवा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। हम यहाँ मौजूद हैं रेड कारपेट पर, जहाँ हम वेलकम करेंगे तमाम डिग्निटरीज का, उनसे बातचीत करेंगे, चिट चैट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके थॉट्स इफ्फी के बारे में, सिनेमा के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं दूरदर्शन पर, क्योंकि अक्षय दूरदर्शन इसका लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है पूरे इस समारोह का। And most importantly, what a beautiful note to begin with. You know, Shaila, the Honorable Minister, Shri Anurag Thakurji, you know, the brainchild, he has given the idea of 75 brilliant minds. And we have some of them with us here who have, you know, been part of IFFI this year. And many, many congratulations to them, first of all. Congratulations to all of you. Congratulations to all. और अक्षय, अगर हम देखें तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत का सिनेमा, उसका भविष्य क्या होने वाला है। भारत आगे की ओर देख रहा है। तो चलिए बात करते हैं इन 75 क्रिएटिव माइंड से। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जैसे बाकी के ऑडियंस सोचते थे कि नहीं हम हॉलीवुड सिनेमा देखेंगे, तो ये जो नया स्टेप लिया है श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, तो ये अब हम ये सोचेंगे कि हाँ, इंडियन सिनेमा इज़ ऑल्सो डूइंग गुड, हम उस पर भी अपना टाइम दे सकते हैं और अच्छी सिनेमा यहाँ भी बनना शुरू हो चुकी है। इट्स जस्ट एन स्टार्ट, it's a mile we have to cover up, and thank you for the opportunity. Well, बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छे सिनेमा तो बन ही रही है और फिल्म फेस्टिवल में हम दुनिया भर की फिल्में यहाँ पर देखते हैं। अब किस तरह के, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, किस तरह की फिल्में आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको रही हैं इफ़ी में पिछले 52-53 सालों में, ये 53वां उसका एडिशन है। किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके फेस्टिवल्स में? ऐसे तो पर्सनली मैं रीजनल मूवी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जिसमें आर्ट ज़्यादा दिखे मेरे को। कमर्शियल इज़ क्वाइट गुड, पर इस पे भी फोकस करना पड़ेगा कि हम कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, अपने सिनेमा के द्वारा दिखा रहे हैं जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है। तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे सोसाइटी को और सारी चीज़ों को, क्योंकि सिनेमा ही ऐसा चीज़ है जिसे सब लोग देखते हैं। अक्षय, यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है जिसमें इन 75 क्रिएटिव माइंड्स को एक चैलेंज दिया गया है। आप अपने चैलेंज के बारे में बताएंगे? एक्चुअली बहुत ही चैलेंज एक मतलब है, बट हमारा जो टीम है बहुत ही मतलब हम लकी है कि हमारा डायरेक्टर बहुत अच्छा है, हमारा टीम बहुत अच्छा है। सो चैलेंज है बट मज़ा भी आ रहा है बहुत। क्या आप मीडिया का कोर्स कर रहे हैं और आगे फिल्म में क्या आप भविष्य देखते हैं, क्या समझते हैं कि आगे का भविष्य क्या है सिनेमा के लिए? I think ये शैला थोड़ा सा ज़्यादा डीप क्वेश्चन हो गया। I think they are young budding filmmakers, but definitely they are the future of Indian cinema. मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ये आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और बहुत सारी फिल्मों से इंस्पिरेशंस भी आप लोगों को मिलती होगी, तो किस तरह की फिल्में आपको इंस्पायर करती रही हैं? कौन कौन से फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, स्क्रीन राइटर्स जो हैं जो आपको प्रभावित करते रहे हैं? किन से आपको इंस्पिरेशन मिली है? So yeah, I'm from Tamil Nadu, so I like films from there, and I'm inspired by an actress called Aditi Balan from a film called Aruvi. So it kind of changed the whole perspective of how AIDS and a female with AIDS suffer. So I would like to be an artist like that and work in that category. Fantastic. अक्षय, 75 लोग हैं, 75 क्रिएटिव माइंड से इस समय सभी से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 75 क्रिएटिव माइंड्स ये दर्शाने के लिए काफ़ी हैं कि भारत में सिनेमा का भविष्य क्या है और दुनिया किस तरह से भारत को सिनेमा के तौर पर देख रही है। आई थिंक इफ़ी ने जो एक लेवल सेट किया है इंडियन सिनेमा का और दूसरी फिल्मों को इंडिया में लाकर, बहुत ही अच्छा एक भविष्य है इंडियन सिनेमा का, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट फॉर दैट। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं पैनोरमा की। वेल, to begin with, first of all, we have to thank these young budding minds and let them go and enjoy the opening ceremony, guys. Thank you so much. Many, many congratulations आप सभी को। अच्छी फिल्में बनाइए and enjoy the festival. इफ़ी 2022 में इंडियन पैनोरमा का अपना आकर्षण है। फीचर फिल्म श्रेणी की बात करें तो 25 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें जय भीम, मेजर, अरिप्पू, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में शामिल हैं। भारतीय पैनोरमा की अगर बात करें तो यहाँ कला, संस्कृति और रचनात्मकता का अनूठा समन्वय आपको मंत्रमुग्ध कर देता है।
हर जॉनर की फिल्में हैं और उन फिल्मों में एक तरफ रिश्तों की मिठास है तो दूसरी तरफ समसामयिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से पेश करने की चुनौती है। और जब आप इन फिल्मों को इस इफ़ी में देखेंगे तो आपको भारत की लोक संस्कृति, लोक परंपरा के साथ साथ बहुत कुछ देखने, समझने और जानने का अवसर मिलेगा। सिनेमा समाज का दर्पण है और इंडियन पैनोरमा उसी को दर्शकों के सामने पेश करने का बेहतरीन माध्यम है। अरियप्पू की बात करें या फिर सिनेमा बंडी की, धारबी कुर्वी की बात करें या धर्मवीर मुक्काम पोस्ट थाने की, कई ऐसी फिल्में। चांद ने बोला समंदर से, तू उबलता है मेरे प्यार में, लेकिन आके कभी मिला नहीं, बस यही एक असफलता है मेरे प्यार में। समंदर ने बोला यार चांद, मिलने को तो मेरा भी जी बहुत मचलता है, लेकिन क्या करूं, तू हर महीने 30 बार अपनी शक्ल बदलता है। शैला, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वांट टू टॉक अबाउट द ओपनिंग फिल्म। हमने इसके बारे में बहुत बात की है और क्या कमाल की फिल्म है ये फेस्टिवल को ओपन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कमाल की फिल्म है और अपने दर्शकों को लिए चलेंगे आईनॉक्स, जहां अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रियन फिल्म एल्मा एंड ऑस्कर की स्क्रीनिंग हुई है। आपको बता दें एल्मा एंड ऑस्कर एक बायोपिक है जो कि एल्मा मल्हर और कलाकार ऑस्कर के रिश्तों पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं आईनॉक्स में क्या हुआ। बर्नर की फिल्म एल्मा एंड ऑस्कर की स्क्रीनिंग हुई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस अवसर पर मौजूद थे और सर ओपनिंग फिल्म पहले दिखाई जा रही है, किस तरीके से बदलाव किया है और क्या इसका जरूरी था? देखिए, दुनिया की बड़ी फिल्मों को भारत के पटल पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लाने का अवसर मिला। ये 53rd एडिशन जो है अपने आप में बहुत भव्य भी है और इसमें फिल्म बाज़ार जो बनाया गया बहुत शानदार बना है। और मैं तो ये कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म बाज़ार भी बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को भारत पर लाया गया और भारत की क्षेत्रीय फिल्मों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम हम इसके माध्यम से कर रहे हैं। भारत की कला संस्कृति को दुनिया में पहुँचाने का काम भी होगा। तो एक बड़ी मार्केट को प्रोडक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए भारत बने, उस दिशा में बड़ा कदम है और मुझे प्रसन्नता है कि दुनिया भर के लोग इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सर एक तो देखा अक्षय, अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन अभी उससे पहले हम बात कर रहे थे इंडियन पैनोरमा की फीचर फिल्मों की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन फीचर फिल्मों की। Yeah, there are approximately 20 films in the category of non-feature Indian panorama. And I believe the beauty of this festival is the different sections, different categories which have been curated. And, you know, there is everything for everyone, I believe. All the thousands of delegates who have been roped in for the festival, I think they are going to have a gala time here. इंडियन पैनोरमा के नॉन फीचर फिल्म श्रेणी की बात करें तो इसमें विषयों की विविधता जहां एक ओर सबसे बड़ी खासियत है, वहीं युवा फिल्म निर्देशकों के क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स प्रेजेंटेशन को बेहद प्रभावी बनाते हैं। I was 79 and Ruby was about Ruby. Wow, I don't know. No age, no age. Hi. Sexy, no light. Can show to मैं. All in the red. Take it easy, man. Yes. 20 फिल्मों की स्क्रीनिंग होनी है इसमें। 20 फिल्मों की स्क्रीनिंग होनी है। इनमें तांग, आर्ट ऑफ सत्यजीत रे, क्लिंटन और फातिमा जैसी फिल्में हैं। ये फिल्में भारतीय समाज की विविधता और अनूठेपन को बहुत सहज और सरल ढंग से पेश करती है।
see the 3, 2, 1, 0, +1, 2. अक्षय, जब हम ये कहते हैं कि अगर आप वही किताबें पढ़ रहे हैं जो हर कोई पढ़ता है, तो इसका मतलब जो सब सोच रहे हैं वही हम भी सोचते हैं। और लेकिन जब हम इफ्फी जैसे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि अगर आप वही सिनेमा देखते हैं जो सब देख रहे हैं, यानी कि आप वही सोच और फील कर सकते हैं जो सब कर रहे हैं। लेकिन इफ्फी बहुत ख़ास है क्योंकि इफ्फी में बहुत कुछ बहुत ख़ास है, यहाँ की फिल्में बहुत कुछ कहती हैं। और लेट्स वेलकम, यहाँ पर हमारे साथ रेड कारपेट पर मौजूद है एमी, जो कि नेशनल अवार्डी है। बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दिस ईयर आई एम the jury of 75 creative minds too. So yeah, last year my film was honored as the inaugural film at Indian Panorama. So yeah, बहुत अच्छा लग रहा है. The 75 creative minds we just spoke with them, and I think the enthusiasm, the energy of those young budding filmmakers was all evident to see. What was your personal experience interacting with those young filmmakers? See, it was awesome. Like मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि हमारी युवाओं को फिल्म को लेके, एक्टिंग को लेके, फिल्म मेकिंग को लेके इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं और इतने सारे टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स आए थे कि हम सारी जूरीज को ऐसा लगा था कि मन कर रहा था कि हर किसी को बुलाए यहाँ पे। And it's really a great thing that IFFI is organizing such kind of platform, and I want to thank Ministry of Information and Broadcasting, IFFI, and FDC all for giving this platform. We were just talking about the fact that, you know, with my colleague, that, you know, how difficult it is for jury to kind of pick the best of things. I think it is one of the toughest job when it comes to a film festival. As a young artist, what is that one particular aspect that you look for, that spark in young artists? My department was acting and makeup, but you know, I was so impressed with all participants, and I really want to thank all of them. मेरे बस में होता तो मैं हर किसी को बुलाती, तो मैं बाकी जूरीज को वही बोल रही थी। एंड यू नो, इसका सबसे अच्छा पार्ट यही है कि वो इंडिया के कहीं भी कोने पे रहे, वो यहाँ पे आ सकते हैं थ्रू हिज टैलेंट। सो ये सबसे बड़ी बात है कि हम उनके पास ऐसे जा रहे हैं इफ़ी, कि वो इफ़ी में आके, इफ़ी जैसा एक प्लेटफॉर्म अगर किसी को मिल गया तो वो बहुत बड़ी बात है। एमी, जिस तरह से नेशनल जो सिनेमा है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है, उसमें हमारे आज के जो युवा है, जो क्रिएटिव माइंड्स हैं, उनका रोल आप भविष्य में कैसे देखती है? मुझे लगता है कि आज की जो युवा है, जैसे हम बोलते हैं टुडेज चिल्ड्रंस आर सिटीजन्स ऑफ टुमारो, सो इन लोगों के हाथ में हम अपना कल्चर, हमारा जो संस्कृति है दे के जाएंगे, तो ये लोग ही जो है जो आगे लेके जाएगा भारतीय संस्कृति को, इंडियन फिल्म्स को। तो मुझे लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरी है। हम फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बोलते हैं, फिल्म के जरिए हम अपनी दुनिया दिखाते हैं, हमारी जगह दिखाते हैं, हमारे कल्चर, हमारे फूड हैबिट्स, सब कुछ। तो उन सब को वर्ल्ड के सामने दिखाने की अलग ही नज़रिया होता है, सिर्फ नाचना गाना ही फिल्म नहीं होता है। तो ये सब ना, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनको फील होता है कि ऐसा भी फिल्म होता है, ऐसा भी दुनिया होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप एंजॉय कीजिए भारतीय Thank you so much, you're looking gorgeous. राष्ट्रीय सिनेमा के इस उत्सव को। Enjoy the evening. I think Amy made a very important point here. You know, we've been talking about this fact that, you know, how a film festival like IFFI can, you know, just present you on a platter the world cinema, the different dimensions of filmmaking, you know, be it technology, be it script writing, be it acting, you know, all these aspects of filmmaking can be tapped through a film festival. And I think it's amazing that we are into this 53rd edition here, and the result is out there to see for everyone. I think it's going brilliant. बिल्कुल अक्षय, 53rd एडिशन में बहुत कुछ नया है इस बार। अगर हम फिल्म बाजार की बात करें तो फिल्म बाजार में भी दर्शकों के लिए बहुत कुछ खास है। फिल्म बाजार के बारे में मैं एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जिस तरह के जो एलिमेंट्स फिल्म बाजार में ऐड किए गए हैं, जैसे कि विप जो एक एलिमेंट है, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर
FBR फिल्म बाजार रिकमेंड्स, जिस तरह की ये एक इतनी बड़ी हेल्प है और जिसे कहते हैं इतना मेजर पुश मिलता है यंग फिल्म मेकर्स को या जिनकी फिल्में रिलीज नहीं मिल पा रही हैं, वहाँ पे दे कैन मीट देयर पोटेंशियल पार्टनर्स. दे आर वेरियस स्टॉल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज. दे कैन पार्टनर विद whatever or anyone that suits their projects which is in tone with their film, and I think it's an amazing section of our IFFI, and I think it's a great opening for everyone. बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि गोवा में किस तरह से इफ़ी का फीवर जो है लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है. परसों जब मैं आ रही थी इसमें शामिल होने के लिए, आज ओपनिंग सेरेमनी है लेकिन 2 दिन पहले से ही गोवंस जो हैं वो इफ़ी के खुमार में डूबे हुए हैं और इफ़ी की ही बातें कर रहे हैं. आपने गोवन की बात करी है कि यहाँ पे गोवंस के लिए भी फिल्में हैं, उनकी 7 बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में चुनी गई हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर मणिपुर की फिल्में दिखाई जाने वाली हैं और मणिपुर का एक सेक्शन है जो वो मणिपुर सिनेमा है अपने 50 साल पूरे कर रहा है इस साल, और उसके लिए हमने एक खास सेक्शन तैयार किया है मणिपुर फिल्मों का. और बिल्कुल यहाँ पर रेड कारपेट पर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं. हम वेलकम करेंगे तमाम गेस्ट का, डिग्निटरीज का, बातचीत करेंगे उनसे, चिट चैट करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे उनके विचार क्या हैं इफ़ी के बारे में. यहाँ अभी लेट्स वेलकम हमारे साथ मौजूद है, आइए. Everybody's favorite, Mr. Paresh Rawal, and we are so happy to have you, Paresh ji. Please join us here and welcome to IFFI 53rd edition, sir. Thank you so much. Thank you. Sir, you are obviously a man who needs no introduction. Your association with cinema is decades old. IFFI is into 53rd year. And you know, this is the first full-fledged opening ceremony we are having after the post-pandemic era. Your thoughts on that, sir? What it is like to getting back to the audience one-to-one? First of all, we are coming after 2 years, as you said. So that's a big thing. Another thing is that my film for the first time it is getting premiered in a film festival like this. So it's a moment of pride for me and I'm very happy for that. I hope the audience loves the film. आप अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों को गुदगुदाते रहे हैं. आपकी कॉमेडी हो या फिर सीरियस रोल, सभी दर्शकों को बहुत पसंद आते हैं. आज का जो सिनेमा है उसे आप कहाँ जाते देख रहे हैं? आप देखिए 53rd एडिशन, बहुत खास संस्करण इफ़ी का. ये बिल्कुल क्योंकि एक तो 2 साल के बाद आया है, जो कोविड के पेंडेमिक के बाद खुला है, एंड बहुत सारी अच्छी फिल्में आई है. और मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए पर से इस गोल्डन पीरियड है, क्योंकि नए राइटर आ रहे, नए डायरेक्टर आ रहे, नई टैलेंट आ रही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है. सर, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे हमने फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी ओपन ही किया तो 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स जो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी का आइडिया है और किस तरह से वो यंग टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, कितना हेल्पफुल रहता है इफ़ी जैसा एक ग्रैंड फेस्टिवल यंग आर्टिस्ट के लिए जब आपने शुरुआत की होगी अपने करियर की? जब हमने शुरुआत की थी तो हमारी फिल्में फेस्टिवल के लायक नहीं होती थी, मैं बड़ा ऑनेस्टी के साथ कहूँगा. ठेठ कमर्शियल सिनेमा होता था उन दिनों. वो जो अलग सिनेमा जो होता था वो अलग लोग बनाते थे, जो कमर्शियल लोग होते थे वो इस किस्म का सिनेमा नहीं बनाते थे. तो हमने तो सिर्फ सिनेमा में, फेस्टिवल में फिल्में देखी हैं और उनसे सीखा है, दैट्स इट. ज़्यादा हमारा कोई योगदान रहा नहीं है. दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू सर. Thank you so much. Thank you sir. Enjoy the evening. For the red carpet. और अब हम वार्म वेलकम करना चाहेंगे सेक्रेटरी INB अपूर्व चंद्रा जी का. Please join us, sir. Please join us. Good evening, very sir. warm welcome to IFFI रेड कारपेट. ये इतना जो ग्रैंड आयोजन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत मेहनत है. कैसे देखते हैं आप IFFI के इस संस्करण को? इस बार का जो IFFI है, हमारे जो आज तक के IFFI हुए सबसे अच्छा IFFI और सबसे बड़ा IFFI है और सबसे बेहतरीन IFFI होगा. आज इसकी शुरुआत है और मेरे को लगता है जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी तब सब लोग जो है, जो यहाँ पहुँचते थे, वो सब खुद कहेंगे कि ये सबसे बढ़िया IFFI रहा. इस बार बहुत सारे नए इवेंट्स इसमें जोड़े गए हैं, कई सारी नई चीज़ें हैं. चाहे दिव्यांग जनों के लिए इस बार जो खास पहल की गई है वो है, या फिर फिल्म बाजार है, बहुत कुछ ऐसा है जो दर्शकों के लिए है. किस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन की?
इस बार ऐसा है कि जो है माननीय जो हमारे मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री श्री मुरुगन जी, वो एक डेलीगेशन लेके गए थे कांस फिल्म फेस्टिवल में, और कांस फिल्म फेस्टिवल में हमें कई चीज़ें जो नई देखने को मिली उसको हमने अनुसरण किया है कि यहाँ पर भी उसको लाया जाए। तो इस बार फिल्म बाजार में आप देखेंगे पहली बार यहाँ पर पेविलियन लगाए गए हैं कोस्ट के अलॉन्ग, जो कि हमने कांस फिल्म फेस्टिवल में देखा था। इसमें इस बार कोई मेरे ख्याल से 40 एक पेविलियन होंगे, जिसमें कुछ राष्ट्र हैं, कई राज्य हैं और कुछ फिल्म कंपनियां हैं जो इसमें शामिल हुई हैं, और ये हमने पूरा काम के आधार पे किया है और हमें अपेक्षा है कि आगे ये बढ़ता जाएगा और ये लोगों को बहुत रुचिकर लगेगा। फिर इस बार एक टेक एग्जीबिशन भी है जिसके अंदर जो है टेक्निकल जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर दर्शाई गई है, और साथ में आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हम 75 वर्ष का बना रहे हैं, वो भी यहाँ पर एक एग्जीबिशन बहुत अच्छी सुंदर लगाई गई है। जो 75 क्रिएटिव माइंड है जो माननीय मंत्री जी ने पिछले वर्ष शुरुआत करी थी, इस बार यूनिसेफ ने उसको स्पॉन्सर किया है, और इस बार उनको एक चैलेंज दिया जाएगा कि उन्हें 53 घंटों में एक फिल्म बनानी है ग्रुप्स के अंदर, जिसको वो दिखाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी नई चीज़ होगी। सर, इस साल के शुरुआत में जब इंडिया वहाँ पे कंट्री डू ऑनर था फ्रांस में, कांस में, और इस साल कंट्री फोकस फ्रांस है, एक कमाल की एसोसिएशन रही है इंडिया और फ्रांस की सालों से इन वेरियस सेक्टर्स, एक्चुअली डिफेंस सेक्टर हो चाहे कल्चरल एक्सचेंज हो। अमेजिंग कंट्री टू पार्टनर विद फ्रांस। Yes, of course. I mean, we had a very good experience at Cannes, and since we learned so many things from at Cannes, so this time we have kept France as the country of focus, and then we enjoy a lot of commonalities, as you mentioned, with France. And we would be seeing a performance from a French troupe also during the opening ceremony. And apart from that, there are 8 films from France which are participating during the film festival. बिल्कुल, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। जिस तरह से भारतीय सिनेमा की उत्कृष्टता पूरे विश्व देख रहा है और इफ़ी उसका साक्षी बन रहा है, गवाह बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी साहब हमसे बात करने के लिए और अपने आपके जो प्रयास रहे हैं वो हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सर, एंजॉय द इवनिंग। और अब हम वेलकम करना चाहेंगे रेड कारपेट पर ज्यूरी मेंबर को, जेम्स एंग्लो बैंटन और नैना विलर डिले को। बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द रेड कारपेट। I'm a jury international and come from Spain. I'm a director of artistic film festival, the oldest one in Europe, and I always talk about this festival in Goa, and I'm testing that it's true. Everything that they told me. This is fantastic program, good, lovely films, and I'm await only to see plenty films here because the atmosphere is fantastic. And ma'am, you are looking very beautiful in this evening. Nice necklace and earrings. If we are asking about कितना मुश्किल होता है किसी फिल्म का सिलेक्शन करना? Yeah, my colleague and I, we were having a word about, like, particularly for a jury member, how difficult it is to choose the best of films, because we have representations from over 79 countries, and choosing from thousands of films down to 250 or 300 odd films. How difficult was it for you, sir? Yes, it's difficult because we have 22 films from around the world, and this is artistic films, but this quality, high quality in general. And I was reading about all my job, and we have very strong and difficult job during these days. Being a jury member has never been easy, but I understand that this evening is going to be all the fun. Enjoy the evening. Thank you so much for talking to us. What an amazing time everybody is having. It's so exciting. The exuberance is very evident here, Shaila. You know, we were talking about, how difficult it is for jury, but the experience of watching a film is so beautiful. मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा दुनिया में जिसे फिल्में देखना ना अच्छा लगता हो। बिल्कुल, और रेड कारपेट पर हम ऐसे तमाम डिग्निटरीज को वेलकम कर रहे हैं जो या तो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, या फिल्मों के शौकीन हैं, या फिर उन्होंने कुछ अच्छा खास किया है, या फिल्म इफ़ी को यहाँ तक लाने में उनका योगदान रहा है। हम रेड कारपेट पर अब वेलकम करना चाहेंगे फेस्टिवल डायरेक्टर रविंद्र जी का। बहुत बहुत स्वागत है रेड कारपेट पर। एक्साइटमेंट हाई है गोवा में, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, we all are fully charged up and geared up to put up our grand performance this time.
IFFI has been, scaled up in a big way this time, and a lot of new and unique concepts have been introduced in the IFFI. So there is a lot of extravaganza for the next 8 days that awaits the cinephiles to go through the unique master classes, the exhibitions, the technological exhibitions. The 75 creative minds have also been a new component. A new challenge has been added up, the 53 hours filmmaking challenge. So a lot of things we have tried to, not only make it as an Asia's biggest, but the world's biggest film festival. So we are kind of marching towards that. Indeed, it is looking really, really great. We were just talking before the opening, sir, like how IFFI 53rd edition is bigger, greater and grander than ever before, especially in the post-pandemic times. It is the first full-fledged opening, and we are so thankful and so happy that all of you partners, Ministry of Information Broadcasting, you as Managing Director of NFDC and Government of Goa, all have come together, have organized this beautiful festival. जब भी हम फेस्टिवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की थी, कितना आपने डिटेल में जब सब बताया था कि कितने ही सैकड़ों देशों से हजारों फिल्में आई थी, उसके बाद क्लोज टू 300 फिल्में चुनना, एंड प्रेजेंटिंग इंडियन फिल्म लवर्स एंड इंटरनेशनल ऑडियंस आल्सो विद दिस प्लैटर ऑफ such a wide range of films, sir. What an amazing achievement it is. Definitely, it was very difficult to choose the around 300 films from the various international entries, especially from 79 countries we received the entries. So finally 79 countries films we will be showcasing, more than 280 films, including the many of the Oscar award winning, the Cannes winning, and which have been won awards in the major international film festival. So we have come out with a basket of such all big films. So plus the Indian panorama is already in very much awaited section, and the retrospective and the homages, as well as Carlos Sora's special retrospective films will be there, and he will be given the Lifetime Achievement Awards. Plenty of animation films, OTTs, UNICEF has also collaborated for the films on the kind of such children's subjects and how they इसके साथ साथ जिस तरह से आपने पूरे गोवा में कैरावैन का जो चुनाव किया है, घर घर तक, जन जन तक फिल्मों की बात को पहुंचाने के लिए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम चाहते थे कि फेस्टिवल की जो आउटरीच है वो कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके लिए हमने ना केवल ऑडिटोरियम तक सीमित रखा इसको, इस बार हमने ओपन एयर स्क्रीनिंग्स बढ़ाई। इसके अलावा आसपास के दूर दराज के जो गांव ज़िले हैं उन सब में यूएफओ के साथ टाई अप करके कैरावैन्स के साथ हमने 5 कैरावैन्स जो दिन भर वहाँ मूव करेंगी, और जो लोकल कोंकणी भाषा की और रीजनल भाषा की जो फिल्में हैं, पॉपुलर फिल्में हैं, उनका एक हमने कंटेंट क्यूरेट किया है, जो कि सभी लोग उसको देख कर काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ शैला, एक खास बात यहाँ पर जो इस बार के एडिशन में हमने ऐड की है कि जो 3 वेन्यूज थे, उसके अलावा मल्टीपल स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि फेस्टिवल को और इंक्लूसिव बना दिया जा सके कि गोवा के किसी भी कोने में जो बैठे हैं वो फिल्म देखने से वंचित ना रह जाएं। निश्चित तौर पे, और काफ़ी हमने 100 भी जो शो टाइम्स है वो भी इंक्रीज़ किया है। इवन रात को पहले लेट नाइट शोज़ नहीं होते थे, इस बार हमने इवन सभी थिएटर्स में लेट नाइट शोज़ भी रखे हैं, क्योंकि कुछ ऑडियंस प्रीफर करता है 9-10 बजे के बाद में शो देखें, तो टिल 1 o'clock द मूवीज़ विल बी स्क्रीन इन द थिएटर्स एंड द पीपल कैन एंजॉय एज मच एज पॉसिबल। And also I want to talk about one more thing here, that there is a particular section, we have various section in the IFFI over the years, in the last 50 years plus journey of IFFI. एक एडिशन जो आपने इस साल ऐड किया है, जो लोगों को दिलों को दहलाने के लिए है यहाँ पर, मकाब्र ड्रीम्स, जिसमें हॉरर फिल्में दिखाई जाएंगी। सर, उसके बारे में प्लीज बताएं। Definitely, this horror genre, people were asking why you don't keep these kind of films. Because there are certain section of people who are very fond of these kind of films. So we have specially curated this section for them. Yes. So they would be able to enjoy, and especially in the late night shows also. All right, sir. Thank you so much. Enjoy the evening. Thank you for being with us. Enjoy the evening. और जिस तरह से हम वेलकम कर रहे हैं तमाम डिग्निटरीज का, एक के बाद एक बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही हैं रेड कारपेट पर। अब हम वेलकम करना चाहेंगे वानी त्रिपाठी जी को। बहुत बहुत स्वागत है वानी जी आपका रेड कारपेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोवा तो मेरे लिए बिल्कुल कहना चाहिए कि सेकंड होम है जी। आप मुझे फेस्टिवल से जुड़े शायद 1 दशक होने को है। यही बात मैं बोलने वाली थी कि हर साल हम आपको देखते हैं। गोवा वाले भी यही फील करते हैं आपके बारे में। पर देखिए, जब सिनेमा का सेलिब्रेशन हो तो गोवा से बेहतर स्टेट हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप देखते हैं कि वो नगरी जो सांस्कृतिक रूप से, कला रूप से इतनी ज़्यादा संभ्रांत है, इतनी वाइब्रेंट है, ऑल्सो गोवा इज़ बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट शूटिंग डेस्टिनेशन, फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन फॉर द कंट्री. सो आई थिंक द फेस्टिवल ऑल्सो अबेट्स दैट इन so many ways. Absolutely. I think it's a very important point that ma'am has made here, that the growth of Goa as a state along with IFFI in the last 20 years or so, ever since the late और अब ये सुरम्य पर्यटन नगरी जो है
ये इफ़ी का घर बन गया है. 20 years it has become the permanent house here, and people like you who have supported us so beautifully, like a family. I think the journey has been absolutely amazing. We are all a fraternity. We are the Indian film industry. Rather, I would also want to say that the Konkani film industry, which a very beautiful film called La Nacham Kompasar got the national award couple of years ago, and it opened floodgates for cinema of the Marathi and the Konkani industry. Also remember, the thrust of the festival is co-production, market and roundtables with the states of India. Like this year, Madhya Pradesh got the best film friendly state award. Within the bazaar, you will see that they are there in their full strength, and how Madhya Pradesh is showcasing, and Uttarakhand and Uttar Pradesh, and of course Goa, which I think remains the hub for cinema and the hub for IFFI. वानी जी, एक आखिरी सवाल. आप इतने सालों से गोवा आ रही हैं, हर साल फिल्म फेस्टिवल में आप शामिल होती हैं, इतने सालों में, और अब ये 53वां जो संस्करण है, आप क्या फर्क देखती हैं सिनेमा के स्केल में? देखिए, इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि हमारे आदरणीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक पूरा डेलीगेशन लीड किया था कान फिल्म फेस्टिवल में. फ्रांस फोकस कंट्री है, आज़ादी का अमृतोत्सव हम मना रहे हैं, 75वां साल है, वैसे ही कान फिल्म फेस्टिवल का 75वां साल था. तो जो बातचीत और जो चर्चा वहाँ फ्रांस में हुई इस बार, इसीलिए फ्रांस फोकस कंट्री है, तो ये एक बहुत बड़ा बायलैटरल डायलॉग भी है. और एक और बहुत अभूतपूर्व बात जो हुई वो ये है कि इस बार क्लोजिंग हमने ओपनिंग सेरेमनी के पहले करी, विच इज़ एक्चुअली अ गिवन ट्रेडिशन व्हेन इट लुक एट इंटरनेशनल फिल्म festivals all across the world. So I think there is great international cinema. I'm also looking forward to the Indian panorama, which will be in full strength with independent and young filmmakers from all across the country this year. बिल्कुल. Let you enjoy the evening. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you. Same here, ma'am. Thank you. Well, this is really amazing. That's what we were talking about, how the festival is becoming more and more important and is becoming bigger and bigger with us. बिल्कुल. बहुत बहुत स्वागत करेंगे, जिस तरह से हम डिग्निटरीज को यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं. हमारे साथ रेड कारपेट पर इस वक्त मौजूद है फ्रांस के एम्बेसडर. आइए, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड कारपेट. हाउ डू यू? Well, so very good evening to you first of all, and we are absolutely honored to have you here. And before I get further into a conversation, I want to tell our viewers a little anecdote here. My name is Akshay and I am from Chandigarh, and Chandigarh is a city you must have heard about. It is the most planned city. I've been there many times. So say hi to Chandigarh, sir. Hello, Chandigarh. I want to tell, obviously we all know that Chandigarh was designed by the French architect Le Corbusier. We share a great bond with France, and I can vouch for it that there is not a single artist around the world who is not influenced by French sensibilities. You have impacted positively every artist over the centuries, sir. And what a pleasure to have you here. What a pleasure to have you here in the country focus section. Well, I'm delighted. I mean, France is delighted to be the country of focus this year of this huge festival. I mean, the bond between India and France are great, and for movie especially. I mean, the first time movie came from France to India was 1896. The brother Lumière, who were the inventors of the movie industry, came to Mumbai, and their movie was screened in Mumbai. And today we keep on doing a lot of co-productions. Some have been very successful, like Lunchbox, like Sir. And we have a great movie industry. We love you. We have more than 300 movies a year, and we do a lot together. Goa is the city of joy, and there is festival fever is high. How do you feel? Well, I feel great. I feel great to be in Goa. I feel great to be at this movie festival. We have 20 movies from France this year, and we hope we're going to win. Absolutely, Honorable Ambassador. I mean, the connection India and France share it's beyond films, cultural, defense sector. We have very strong bonds. Like we were talking with the other dignitaries early this year during the Cannes, they celebrated 75 years. We in India, we are celebrating 75 years of Amrit Mahotsav. How do you look at this whole partnership between India and France in the last 50 years or more than that, in fact? I mean, for the last 70 years, 75 years, there's been a lot of trust between our government. We've always been side by side
It's good time and less good times. And now what we're building together is people-to-people bonds. I mean, through culture, through exchanges. We were with students. We want more and more students from India coming to France. We feel that they are great. I think that they are full of energy, and we feel that we're building the future together. और Thank you, Ambassador. Enjoy the evening. It's Enjoy pleasure the talking to evening. you. Yes, pleasure talking to you. और अब हम वेलकम करना चाहेंगे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को। रेड कारपेट पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके प्रयासों से आज देखिए इफ़ी कितना खास और किस बड़े स्केल पर उसका शुभारंभ हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सबसे पहले तो। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मैं सभी जो गेस्ट गोवा में आए हैं, खास करके जो इंटरनेशनल गेस्ट जूरीज हीरोज सभी गोवा में आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गोवा इज़ रेडी फॉर द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सर, जो इंतज़ाम है, जितना भी यहाँ पे गोवा में ऑल इंक्लूसिव जो फेस्टिवल बना है इस बार, ये बिगर एंड ग्रेटर है पिछले सभी एडिशन से। किस तरह से सभी लोगों को गोवा के कोने कोने में फिल्में दिखाई जा रही हैं, किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं गवर्नमेंट और आप सभी लोग जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट वी हैव अचीव्ड। थैंक यू। ESG और NFDC ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। द स्क्रीनिंग ऑफ द मूवीज एट द मिरामार बीच, एट द जूरिस पार्क, आल्तिनो, मरगांव और बाद में सभी बाकी जगह पे भी स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं, चाहे कि मैक्सिमम लोग इफ़ी में इन्वॉल्व हो जाए, फिल्म देखे। यही डिड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। बिल्कुल, ये जो वार्षिक फिल्म महोत्सव होते हैं, ये कला और ऊर्जा, संस्कृति, इसकी भावना को समेटकर तमाम अलग अलग विचारों के लोगों को एक साथ एक ही छत के नीचे लेकर आते हैं। इफ़ी अपने आप में बहुत खास है। ये जहां भारतीय संस्कृति का परिचायक भी है, वहीं भारतीय फिल्मों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर और भारतीय फिल्मों को दुनिया कैसे देख रही है, इसकी भी एक वानगी प्रस्तुत कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। गोवा हमेशा के लिए आर्ट एंड कल्चर के जाना जाता है और गोवा में खास करके जो कलाकार रहते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए इस बार खास मैंने जो गोवा डिवीज़न का यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है और इस बार के स्पेशल क्लासेस गोवा के लिए भी, गोवा फिल्म के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। सर, 2004 में लेट श्री मनोहर पारिकर जी जब गोवा में इसको परमानेंट वेन्यू के तौर पर लेके आए थे, अगले साल इसको लगभग 20 साल हो जाएंगे और फेस्टिवल यहाँ आने के बाद जिस तरह से अपने पूरे चरम पर पहुँचा है, आई थिंक ये एक ग्रेट डिसीजन रहा है। और किस तरह से इफ़ी एज ए फेस्टिवल ऑफ इंटरनेशनल स्टैचर हैज़ टर्न्ड आउट। जी, आपकी बात सही है। एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने 2004 में फिल्म फेस्टिवल गोवा में लाया था और उसी के बाद से हम आज तक परमानेंटली इफ़ी गोवा वेन्यू बन गए हैं और इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी कर रहे हैं यानी द परमानेंट वेन्यू के लिए, वो हमेशा के लिए यानी बाद में गोवा सरकार लोगों को भी यूज़ हो जाता है और डेफिनेटली। लेकिन इफ़ी के वास्ते तो फिल्म कल्चर गोवा में बढ़ रहा है, फिल्म शूटिंग गोवा में बढ़ रहे हैं और एंटरटेनमेंट सोसाइटी के थ्रू वी आर गिविंग द सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर द फिल्म शूटिंग के लिए गोवा में बढ़ रहा है। इसीलिए फिल्म शूटिंग को गोवा में बढ़ावा दे रहे हैं। इस बार आपने जो कई सारे नए इसमें आयाम डाले हैं, कई सारे नए इवेंट्स हैं, उनके पीछे क्या विचार रहा, जैसे चाहे वो दिव्यांगजनों के लिए खास प्रयास हों या फिर कई और प्रयास हैं? या खास करके दिव्यांगजनों के लिए हमने इस बार फिल्म में इन्वॉल्व किया है टू फिल्म इंडस्ट्री सब लोगों की तरफ पहुंची, सभी सेक्शन ऑफ द पीपल के पास पहुंचनी चाहिए, इसीलिए उसका हमने प्रयास किया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस के लिए और एंजॉय द इवनिंग। That was Honorable Chief Minister Shri Pramod Sawant ji, and obviously they all deserve a big congratulations on organizing this festival, this edition at such a grand stature. बिल्कुल, और हम यहाँ जश्न मना रहे हैं कला और संस्कृति का। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कला और संस्कृति ग्रो कर रही है, किस तरह से हमारी कला और संस्कृति दुनिया में एक नई पहचान बना रही है। हम यहाँ तमाम डिग्निटरीज को वेलकम कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके विचारों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और भी रेड कारपेट पर आपको तमाम डिग्निटरीज से मिलवाएंगे। लेकिन अक्षय, उससे पहले हम मणिपुरी सिनेमा की बात कर लेते हैं। आई थिंक मणिपुर सिनेमा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अपने 50 साल कंप्लीट कर रहा है और कमाल की फिल्में बनती हैं। जिस तरह के थीम्स मणिपुर सिनेमा में दिखाए जाते हैं, जिस तरह के आर्टिस्ट वहाँ पर हैं, और आई थिंक द सिनेमा हैज़ मणिपुर सिनेमा हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर।
할머니, 시우 이름하니니 놈이 도커도록 오파고다. 밑에 심으로 샤브 대신다고. मणिपुर के 5 दशक का ये सुनहरा सफर इफी का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ 5 फीचर फिल्में और 5 गैर फीचर फिल्में मणिपुरी की दिखाई जाएंगी। ये 5 दशकों का सफर बेहद साहसपूर्ण, सरल और उल्लेखनीय रहा है। मणिपुर के कई फिल्म निर्माताओं ने भारतीय सिनेमा में मणिपुर की जगह स्थापित करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में ख्याति अर्जित की है। प्रभावशाली कलात्मकता और जोश के साथ मणिपुरी फिल्म बहुत तेजी से अपना एक अलग मकाम बना रही है। ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤꯀꯣ ꯆꯥꯎꯔꯦꯟ ꯅꯪ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯈꯔ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯅꯌꯥ ꯈꯤꯒꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯣ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯀꯝ ꯑꯣꯟ ꯃꯨꯚ यहाँ रेड कारपेट पर अभी बहुत सारे डिग्निटरीज से बात करने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अवार्ड विनर कार्लोस सोरा की बेटी। तो चलिए बात करते हैं। Well, should I begin with first of all congratulating you. Your father is given the Lifetime Achievement Award, Satyajit Ray Lifetime Achievement Award this year. Yeah, so thank you very much. We're very, very happy, very, very honored of having this award this year. And he's not here today with us, but he's saying that he's really in love with India and he's really honored of receiving this award. We are in love with him, his films, and first of all, I want to say many, many happy returns for happy birthday. I think he is celebrating his birthday this year, 90th birthday. Carlos Sora is celebrating here. 91 birthday. He is 91, my dear friends. All the viewers must know that we are doing a special section curated of Mr. Carlos Soras, the Spanish legendary filmmaker, and all his films, some of his award-winning films will be showcased here, which have traveled all over in different film festivals. Obviously, it's a great feeling, you know, your father, such a legendary filmmaker, and he continues to deliver film after film with amazing themes. And you know, he's still working. That's why he's not here today, because he's rehearsing a theater play. So he only has 2 free days per week. So he's still working on his movies and he's still working on his art. So that's amazing. That's exactly what we're saying, that the man is so committed and dedicated, Mr. Carlos Sora, the Spanish legend, and we are so proud and pleased to bestow that Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Mr. Sora, and we have selected some of his amazing films. You know, if you could throw as his daughter, you know, what is his process of filmmaking? Because the way he touches metaphors, the way he uses symbolism in his films, you know, what exactly, you know, what is he like in personal life? I mean, he's a person that he's always improving and he's always doing different things. So he's always working on trying to do different, and he's trying always to work with the mind and with the imagination. So I think that's the for him the motivation and why he's always doing different things and doing different movies. And if you see his movies, they are all of them different, and he's always trying to move one step forward and to do something. I mean, he worked with the dance, he worked with the music, he also worked with the imagination. I've been working today for the city, and everything is with the International Film Festival of Goa, and it's really, really nice. I see that all the city, it's completely involved on the festival, and that's amazing.
When you were talking about your father, his process of filmmaking, Shala, when we were talking, she mentioned that how he looks at every aspect of filmmaking, be it music, be it painting or exhibition. You know, IFFI has curated so many sections, be it the exhibition or about the film technology, be it the master classes or kaleidoscope, try to curate all the different dimensions of filmmaking. How do you look at film festivals as in terms of partnering with young filmmakers and, you know, the kind of experience that we have personal one-to-one with the audiences? I think the film festivals are very, very important for all the film industry, but more for the young or for the new directors or for the new filmmakers, because it's the way that they can show their movies, the way that they can get in touch with another people of the industry. So they're really, really important. No? So that I think that, and also here in India, but in Europe, in the States. So I think it's really important, and we have to keep moving forward with the film festivals and keep doing that, because it's the way that we can improve and that we can still making our movies. So have a great evening, Anna. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Pleasure talking to you. Enjoy the evening. Talking to you. So much. Bye. Thank you. और अभी हम आपके लिए बहुत सारी फिल्म्स, बहुत सारे रिव्यूज लेकर आने वाले हैं, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट कौन होगा रेड कारपेट पर। तो चलिए आपका ये इंतजार खत्म करते हैं। हमारे साथ है ऋषिता भट्ट, एक्ट्रेस ऋषिता भट्ट, झांसी की रानी। कैसे देख रही है आप 53वें संस्करण को IFFI के? खूब खास है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी ये दिल के करीब भी है, क्योंकि इस साल से हमने जिस तरीके का स्टेप लिया है और जिस तरीके के हमने कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, मैं मानती हूँ कि हमें पता लगा है कि 800 से ज़्यादा कंपटीशन में फ़िल्में आई हैं और ऐसी कंट्रीज़ से आई हैं जो पहले शायद पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी। तो इट्स ग्रैंड और शुरुआत हो चुकी है, थैंक्स टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ दैट इंडिया इज़ ऑलरेडी अ कंटेंट हब, और हम मानते हैं कि वो लोग जानते भी हैं, और बहुत कुछ इस साल से शुरू होगा। इंसेंटिव्स होंगे फॉरेन फिल्म को प्रोडक्शन के लिए, और कई सारे फिल्में जो दिखाई जा रही हैं वो फर्स्ट टाइम कंट्रीज़ भी होंगी, तो खूबसूरत होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम ज़रूर मनाएंगे। बिफोर वी टॉक अबाउट समथिंग, आई मस्ट टेल आवर व्यूअर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों रिश्ता से इतना थोड़ा सा दूरी बना के खड़ा हूँ, कि पहले ये कि ज़्यादा खूबसूरती नजदीक जाने से भी खतरा रहता है। दूसरा ये कि कुछ टाइम पहले आई हैड स्टेप्ड ऑन हर गाउन, वी वर डूइंग एन इवेंट इन ताजलैंड्स, यू रिमेंबर Rishita, and accidentally I stepped on her gown and I tore it, so I must apologize for that firstly. and yes, Rishita, like your connection with IFFI, like as a young artist, you know, as a mainstream commercial artist, how do you look at IFFI, you know, with its varied dimensions for all kind of film lovers? So I feel that IFFI, the International Film Festival of India, especially India, we already have so many regional languages. We speak of how human emotions are connected. There are no boundaries. It's about how humanity connects with each other. That's the beauty of cinema. In India, we already see that. And now there is also one step ahead where we have an international platform. We've been having it for a long time, but this year is going to be excellent. Me being part of the Indian film industry, it's a very proud moment. I've been on the steering committee before this, and this is my, I've been on the preview committee 2017, 2018 on the steering committee. This year I'm again on the steering committee. I think I enjoy doing this. I love cinema, and I think the very fact that, you know, your love for cinema, you always want to contribute something. So while you have been part of films, there always comes a time when you want to, you know, see this industry progress. And I think that's why, you know, one wants to be a part of something so beautiful. I think it's जिस तरह से हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार तमाम आयोजन कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर यहाँ पर भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है IFFI में। आपने अभी हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर आपने एक सीरीज में काम किया है। आप कैसे देखती हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान IFFI का 53वां संस्करण? आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जिस तरीके से चाहते हैं कि वो हमारी जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उनमें भी ये जागरूकता हो, और ये भी ज़रूरी है, बिकॉज़ आई फील कि जिन्होंने इतना बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, स्वराज इज़ अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव फॉर दैट,
एंड और क्या मैं मांग सकती थी, रानी लक्ष्मीबाई का जो किरदार मुझे दिया गया है, उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। अभी वक्त है उसे, हाल ही में शूटिंग की है उसकी। और स्वराज एक ऐसे, अगेन आई विल से कि क्या होता है जब आप सिनेमा से जुड़े हैं, आप अपने देश से जुड़े हैं, आपको बहुत ही एक दिल से वो लगाव हो जाता है कि यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग विच आप क्या मांग सकते थे आफ्टर बीइंग इन्वॉल्वड इन फिल्म्स एंड सिनेमा फॉर सो लॉन्ग। Thank you, Rishita. You are an amazing artist, and we are so happy to have you on the steering committee. Enjoy the evening. Enjoy the evening. तो It was Rishita Bhatt with the steering committee, and she's been a part of IFFI for many years. An amazing artist. The way she contributes, the way she connects with young budding actors and artists in master classes and other ways also. और बिल्कुल अक्षय, हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय संस्कृति को, कला को, और सिनेमा की जो विविधता है, उसकी जो दूरदर्शिता है, उसको हम यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। हम अब यहाँ रेड कारपेट पर बहुत सारे डिग्निटरीज को वेलकम कर रहे हैं, उनसे उनके थॉट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे रिव्यूज़ फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक फिल्म दिखाते हैं। பயமா இருக்குது தாத்தா. தாத்தா சாயுது தாத்தா. Teolog powie ci, że w tym jest ślad Boga. W tym? Mhm. A matematyk jedynie liczy. इंटरनेशनल पैनोरमा में इफी में इस बार 183 फिल्में दिखाई जानी हैं, और सबसे बड़ा आकर्षण वो फिल्में होंगी जो कान, बर्लिन, टोरंटो और वीनस जैसे दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्मी समारोह में उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। इन फिल्मों में पार्क चैन वुक की डिसीजन टू लीव और रुबेन ओस्टलुंड की ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, डैरन एरोनोवस्की की द वेल और गियर्मो डेल टोरो की पियोनो चीनो बहुत ज़्यादा दर्शकों को पसंद आने वाली है, और बेसब्री से दर्शक इन फिल्मों का इंतज़ार भी कर रहे हैं। किसी भी फिल्म समारोह की सबसे बड़ी खूबसूरती वही होती है कि देश और दुनिया में फिल्मों के क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, और दुनिया के अलग अलग देश फिल्मों को लेकर क्या सोच रखते हैं, वहाँ की संस्कृति को कैसे दिखाया जाता है, उससे रूबरू होना अपने आप में दिलचस्प, रोचक और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। इफी में इस बार इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग में जो फिल्में दिखाई जानी हैं वो अपने आप में अनूठी हैं, और उसके साथ साथ इसमें विषयों की विविधता है, अनूठापन है, और कई संस्कृतियों का समन्वय भी देखने को मिलता है। كيف ماشي مع الكتابة؟ ماشي مش بطال، مش ماشي بالمرة أبدا. آسف على الإزعاج، إحنا جيرانكم جداد. إيش الساعة؟ 12:30. हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हाइलाइट्स हैं उनसे अपने दर्शकों को रूबरू कराएं। रेड कारपेट पर तमाम डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत करा रहे हैं। हमारे साथ रेड कारपेट पर इस वक्त मौजूद हैं MOSMIB एल मुरुगन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, और जिस तरह से इफ़ी अपने नए आयामों को छू रहा है, कैसे आप अनुभव कर रहे हैं? Entire Goa, the entire nation is eagerly waiting for this IFFI 53rd edition. So you can see this festival mood here in this. Everybody is participating in festival mode. This IFFI is giving first time we are
brought so many new things here. The carpet in this very grand opening. Now we are waiting for this grand opening. So this it's in a while the grand opening is going to happen here. So after this the film bazaar, the first time we are bringing film bazaar market in outside this very big 48 almost 46 nearly 50 stalls are there in this so many countries. They are exhibited them movies and our Indian cinema producers. Apart from that, stakeholders from various states, they are also this. The IFFI is giving a platform to the international players, to the national players. They can come here and they can have an agreement also to co-production in India. So this is a very good initiative by our this IFFI. इस समय जो रीजनल सिनेमा है वो बहुत नए आयाम छू रहा है। रीजनल सिनेमा को आप आज कहाँ ज़्यादा देखते हैं और रीजनल सिनेमा का भविष्य आप कैसे देखते हैं? You see, there is no difference between regional cinema or so all we see all is cinema. So from region to nation to international. So many movies, so many cinemas are hitted like that. So now you can see the regional cinemas also emerging. It is not a matter for the regional or it is a matter for the story. It is matter of the content. This is the people are expecting. I think it's an amazing point the Honorable Minister has made here, that the cinema is cinema irrespective of the language. IFFI, sir, as a platform, brings all the budding filmmakers from small regions, from small states. Manipur cinema is completing 50 years. Goan films are being encouraged here. They are shown across the state in different venues. More screens are put up by the government here so that everybody, anywhere, anybody can see the films. It's amazing because post-pandemic era में जिस तरह से अब हमने full-fledgedly पहली बार festival किया है, I think the government deserves a big clap and many congratulations to all of us. See, once again I want to congratulate the organizers of Goa government and NFDC and INB. So this after COVID, so the people are waited for the like this such programs. They want to participate because the worldwide people are coming. We can see witness here the people how eagerly they are participating and the delegates they are coming after after 3-4 years. So it is in the people we can see them happiness to them the mind they are here. सर बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जिस तरह से फ्रीडम दी गई है, फिल्मों को बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का. Yes, we are providing other co-production. If they can come here and they can get subsidy also, and not apart from that subsidy, the film facility center is there. You can get approval from single window system. If they want to shoot in Ooty, they want to shoot in Kanyakumari, they want to shoot in Kashmir, they want to shoot in Himachal, they can get one place approval. That facilities are there. So our government, Prime Minister Shri Narendra Modi ji is under his guidance, these departments we are taking a height in this. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Minister. Thank you for talking to us. Enjoy the evening. Sir. Let's enjoy the evening. And like the Honorable Minister was talking about, the appeal of this festival is so big and vast and all-encompassing. A lot of international guests coming. Joining me on red carpet is a very interesting duo of producer and director. They have come up with their film in the international panorama here. Hello, good evening. Welcome to IFFI 2022. Very nice meeting you. We are very happy to be here. Hi. Hi. So you are here with your film Happiness, which is in Kazakh in Bucket. It's called Happiness. It's about home violence. So it's a very important topic that we think is a kind of important all over the world. And we are happy to be here and present it in Goa. We already presented it in Berlinale and won the main prize at the 2022. Well, I hope you win prize here as well. So I think wishing you all the luck. So we were just talking about like how film festivals, act as a tool to bring the global film cinema community together. Your film has traveled in other festivals, as you mentioned. You have won a prize there. What has been the experience? How do you look at filmmakers as film festival as the junction of filmmaking?
I think festivals are the most important tool today in the world because, of course, the films that are shown in the festivals, they treat very important topics. Like, for example, our film is treating the problem of home violence, which is very difficult and very important. So we have so many audiences around the world because of the festivals, and we are happy that festivals exist and give us this chance to show the films all over the world. Exactly. I think film festivals with its various sections, be it Panorama, be it Kaleidoscope, or be it Masterclasses, the kind of interaction we get to see, one-to-one interaction with the viewers and fans of cinema is something so unprecedented that is something cannot be matched in any other way of releasing a film. Absolutely, absolutely, and I hope festival continue to exist. And I've been to Goa Film Festival many times, also to Goa Film Bazaar, which is a very important business tool for the festival. So I've been invited many years, and I meet new people, and I produce also films in South Asia. So I think this is something that has to keep going, and we are happy to be back after pandemic. Very happy. We all are very happy that we are back into the groove after in the post-pandemic times. It was difficult times. You know, people have made films on pandemic. We also have film by Madhur Bhandarkar, an Indian filmmaker, a brilliant filmmaker. He has made India lockdown. What was your response to pandemic and, you know, time around that? It was a difficult time for all of us. But how do you as artists looked at this period? Of course, it was very difficult. In Kazakhstan, it was quite a difficult situation. But at the same time, as an artist, we had time to get together and to work even online, you know, because we could always work online on our scripts, on developing new projects. So it was a moment when you could stop and think what's the most important in life also. So I think this gave us a chance. And this film, Bakit, was shot during pandemic, in a small crew, trying to keep all the regulations, but we tried to do it during pandemic. That's very interesting that you were able to shoot that film during the pandemic, and many congratulations to you, and good lucks to you to win award here as well. Enjoy the evening. Lovely talking to with both of you. और अब हमारे साथ रेड कार्पेट पर सीएम, मुख्यमंत्री, गवर्नर और तमाम डिग्निटरीज। Shala, obviously हम देख सकते हैं किस तरह से Honorable Governor and Honorable Chief Minister has just entered the venue, and you know the festival is about to begin. The opening ceremony is all lined up. We have amazing action lined up. Kartik Aaryan is gonna be there, and you know amazing opening ceremony we have lined up here. बिल्कुल बिल्कुल, और हम यहाँ पर तमाम ऐसी डिग्निटरीज को वेलकम कर रहे हैं। हम फिल्मों की उत्कृष्टता का जश्न मना रहे हैं, और देखिए किस तरह से गोवा में ये जो फेस्टिवल फीवर है वो सर चढ़कर बोल रहा है। Talking about the opening ceremony, before that I want to talk about the focus country, France. We were talking to the ambassador of France, and we have a beautiful section lined up about the amazing films like Other People's Children, Across the World, or Sebastian and Bella. There is a section lined up for you. Let's have a look at that. Trop de questions, Monsieur Jones. Quelque chose ne tournait pas rond dans la capitale de cette galaxie. Patricia est avec vous. Yes, she's over there. Merci. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Est-ce que tu m'accompagnes, Harold? Tout le monde a peur. Petite fille, je voyais partout des chiens. फ्रांस इस बार इफी 2022 में स्पॉटलाइट देश है। दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक फ्रांस, जहां कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है, और फ्रांस की 8 फिल्में इस महोत्सव में स्क्रीनिंग की जाएगी। C'était un film d'aventure. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. C'était un roman d'amour. Nous vîmes des paysages d'hiver et des paysages d'été. Mais Ibrahim peut m'envoyer une lettre par email ce vendredi, et moi je lui répondrai vendredi prochain, et ainsi de suite. Et donc, je vous dis à vendredi, Robinson.
यहाँ पर तमाम कलाकारों को वेलकम कर रहे हैं, डिग्निटरीज को वेलकम कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रेड कारपेट पर वन एंड ओनली सुनील शेट्टी जी, जिनकी फिल्में देखते हुए हम बड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत। Welcome to IFFI 2022. Thank you so much. Excited. Obviously, sir, we are very excited to see you. And how do you look at IFFI's edition? We were talking about with the Honorable Minister that in the post-pandemic era, this is the first full-fledged opening ceremony and the festival is in full flow. How do you look at the festival of getting into this time, sir? Oh, beautiful. I mean, and so many people here, the excitement, and the fact is that, I think the world has come down here, and that's very, very important. Goa itself is a place that the world wants to be at, and IFFI being one such international festival, a lot of excitement. Sir, as a mainstream actor, you've been very vocal about how Indian cinema should tap different stories, different genres, and you as a producer and director, and producer and actor, have been able to do that within your own capacity. How do you look at film festivals? In general, can just nurture new talents as the young budding directors? It's happening, and a lot of platforms that are giving opportunities. So it's wonderful, and language is no more a barrier. And that's the beauty of cinema, and because of which talent that you see is extraordinary. The extraordinary talent that's coming out of here. So wish all of them. हम सिनेमा की उत्कृष्टता का जश्न मना रहे हैं। इफ्फी का 53वां संस्करण आप कैसे देखते हैं? बहुत ही बढ़िया, और क्योंकि मौका सबको मिल रहा है, और जितने साल जाते रहेंगे शायद नए नए प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे और ज़्यादा लोग आपको यंग टैलेंट दिखाई देगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द टैलेंट एंड द फिल्म्स। अलग अलग सेक्शंस इंट्रोड्यूस करते रहे हैं टाइम टू टाइम हम IFFI में, सर। इस बार जैसे कहते हैं कि एक हॉरर जॉनर मकाबर ड्रीम्स भी चूज किया गया है, और स्क्रीन्स भी और ज़्यादा लगाई गई हैं, और एक पब्लिशर्स को भी इन्वाइट किया गया, विच वी हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ द कांस बिकॉज इंडियन country was the country focus in France early this year. Yeah, बहुत ही बढ़िया। यानी मीडिया from all aspects जुड़ जाएगा इससे। IFFI से सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स ही नहीं, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि then it becomes something that is genuinely media centric and for cinema and media in India. और मास्टर क्लासेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें यंग एक्टर्स, यंग आर्टिस्ट जो अपने लेजेंड से, अपने फेवरेट आइडल से बात करते हैं, किस तरह की उनकी जर्नी रही है। आई थिंक वो एक क्वेश्चन एंड आंसर और एक 1-to-1 जो एक्सपीरियंस रहता है, वो एक यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स को बहुत हेल्प करता है टू कम आउट ऑफ दैट लिटिल फियर और लिटिल इनहिबिशंस दैट यंग आर्टिस्ट यूजुअली हैव। एब्सोल्युटली, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि फेलियर से ही आदमी सीखता है। जो एक्सपीरियंस लोग मास्टर क्लास आके आपको समझाते हैं, तब आपकी भी छाती चौड़ी हो जाती है कि नहीं यार, गलतियां हम भी करते हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है, फेल हम भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस डेस्टिनेशन को आप देखते हो, रास्ता कांटे तो बहुत होंगे, उसे कैसे टैकल करना, मास्टर क्लासेस आई थिंक टीच यू दैट, एंड लेजेंड्स को सुनना उससे बड़ी बात है ही नहीं। Beautifully put, Sunil sir. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Have a nice evening. और इस वक्त हमारे साथ रेड कारपेट पर मौजूद है MIB मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरह से IFFI का 53वां संस्करण का आप लोगों ने ये आयोजन किया है, ये आप लोग ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की हार्ड वर्क को दर्शाता है। क्या कहेंगे इस मुकाम पर? मैं पहले तो सबका स्वागत करता हूं एशिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल का, जो हर वर्ष गोवा में होता है। 53rd एडिशन है और बहुत कुछ नया है इसमें। नया फिल्म बाज़ार है जहां देश और दुनिया की फ़िल्मों को ट्रेड किया जा सकता है। एक ऐसा अवसर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का, राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, और यही नहीं, OTT सीरीज़ का भी वर्ल्ड प्रीमियर यहाँ पर हो रहा है। तो एक ऐसा मंच बना जहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत कैसे अग्रणी है इस क्षेत्र में। और अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ भारत को, दैट इंडिया शुड बी द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए क्या चाहिए? आपको टैलेंटेड मैन पावर चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन लोग चाहिए, आपको एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर्स चाहिए, फिल्म शूटिंग के लिए बहुत अच्छी लोकेशंस चाहिए। तो को प्रोडक्शन के भी बहुत ऑप्शंस हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के यहाँ पर पहले ही भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है ये जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत महोत्सव से लेकर अमृत काल का समय, यानी कि जब भारत 100 साल मना रहा होगा, तब देश को कैसे देखा जाए। तब विश्व का केवल भारत सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाला ही नहीं, सबसे बड़ा बाज़ार, सबसे बड़ा फेस्टिवल करने वाला,
और दुनिया का एक ऐसा केंद्र बिंदु हो जहां लगे कि भारत के बिना फिल्मी दुनिया अधूरी है। सर सिनेमा के लिए ये दौर जो है एक बहुत बदलता हुआ दौर है। इस वक्त एक जो बड़ी स्क्रीन से हम छोटी स्क्रीन पर आ गए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जो नेटफ्लिक्स और तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में सिनेमा को के लिए कितनी चैलेंजेस हैं? देखिए मैम, जब एक समय था जब न्यूज़पेपर होते थे, टीवी नहीं था, ब्लैक एंड वाइट आया, कलर्ड आया, उसके बाद इंटरनेट का ज़माना है, तो दुनिया तो बदलेगी, समय के साथ साथ हमें बदलना होगा और ये चैलेंज ये रहना ही चाहिए। चुनौतियाँ रहती हैं तो उससे बहुत सारे अवसर निकल कर आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो उस समय घरों तक सीमित हो सकते थे कोविड-19 पेंडेमिक में, उन्होंने बहुत कैमरा से शूटिंग करने के बजाय फ़ोन से भी, मोबाइल से भी शूटिंग करके बहुत कुछ दिया है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियों से ही अवसर निकलते हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ टेक्नोलॉजी यहाँ तक आ गई है कि आपका कोई क्षेत्रीय कुछ बनता है तो उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बनने में समय नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, रीजनल मूवीज हैव गॉन नेशनल एंड इंटरनेशनल। व्हाई सो? बिकॉज द कंटेंट हैड द पावर एंड दैट इज व्हाई, एज यस्टरडे Australian minister met me, he was talking about RRR. Now Australian foreign minister talking about a regional movie which has gone international. That is the power of Indian cinema. और ये तब होता है जब आपके OTT प्लेटफॉर्म से लेके आपकी बड़ी स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे दिखता है। Absolutely, sir. And on that note, we also welcome Varun Dhawan on red carpet here. Varun, very good evening, and we are so happy to have you here. थैंक यू। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर का कि एक्चुअली जेन्युइनली इंडिया वी बीन पुट ऑन द ग्लोबल मैप। यू नो, जब ऐसा एक फिल्म बाजार बनता है यहाँ पे, जिस द 53rd IFFI जो हो रहा है यहाँ पे, तो इतना बड़ा मंच है हमारे सारे कलाकारों के लिए, हमारे सारे निर्देशकों के लिए और नए टैलेंट के लिए। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि सबको लगता था कि अगर फिल्म बनानी है तो सिर्फ बॉम्बे में बना सकते हो, मुंबई में बना सकते हो या सिर्फ महाराष्ट्र में बना सकते हो। बट अभी इतना फैल गया है कि कोई भी जगह से भारत में, कोई छोटे से शहर से, छोटे से नगर से कोई निर्देशक आ सकता है, कोई कहानी लेके आ सकता है और वो बड़ा बन सकता है। जैसे सर ने कहा, हमारा रीजनल सिनेमा अब इंटरनेशनल होता जा रहा है। अक्षय, हमारे साथ प्रसून जोशी जी भी है, उनको भी हम रेड कारपेट पर वेलकम करना चाहेंगे। आपकी एक कविता हमें याद आती है, इस पल की गोलाई देखो, आसमान पर लुढ़क रही है, नारंगी तरुणाई देखो, दूर क्षितिज पर बिखर रही है, नपे तुले वो ही हैं जिनकी बाहों में संसार नहीं है, स्वप्न वही जो नींद उड़ा दे वरना उसमें धार नहीं है। और ये जो इफ्फी का आयोजन है, कहीं ना कहीं ये कविता इसकी एक बानगी प्रस्तुत करती है। जी बिल्कुल, स्वप्न तो युवाओं के हैं और जब से अनुराग जी आए हैं इसमें एक युवा तत्व जो हमने सबने मिलकर जोड़ा है कि 75 क्रिएटिव माइंड्स हों या यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म देने की बात हो, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म फेस्टिवल अब भविष्य का फिल्म फेस्टिवल बनता जा रहा है, आने वाले कल का, जहाँ पे हम यंगस्टर्स को यहाँ पे सीखते हुए देखेंगे, मास्टर क्लास अटेंड करते हुए देखेंगे और आगे उनकी फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे कि वो अच्छी फिल्में बना सकें। तो आई थिंक इट्स बिकमिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर टू लर्न एंड टेक इट फॉरवर्ड। कितना मुश्किल होता है किसी फिल्म को पास करना? आप चूंकि CBFC के चेयरमैन भी हैं, तो कैसे आप फिल्मों को सिलेक्ट करते हैं, पास करते हैं? छोड़ते नहीं आप लोग तो नहीं, फिल्मों को सेलेक्ट करना एक प्रोसेस है। देयर इज अ कमिटी देयर आर वेरियस लेयर्स एंड इट इज़ इन सिंक विद व्हाट द सोसाइटी नीड्स, बिकॉज यू नो विद क्रिएटिव एक्सप्रेशन जुड़ के जो आता है विद क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक तरह का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लोगों के प्रति एक दायित्व है, क्योंकि ये एक सिम्बियोटिक प्रोसेस है लोगों के और क्रिएटर्स के बीच। उसमें कोशिश ये रहती है कि मैंने तो यही प्रयास किया है कि विवादों से ज़्यादा संवाद हों और उसके बाद एक रास्ता निकले कि लोगों को क्या चाहिए और उनकी रुचि कैसे, उसका ध्यान रख करके जो है हम लोग CBFC में लगातार कोशिश करते रहते हैं कि लोगों की जो बदलती रुचियां हैं उनके हिसाब से फिल्म मेकर्स के साथ डायलॉग करें और जो उसकी गाइडलाइंस हैं उसके तहत उनको सर्टिफिकेशन का प्रोसेस उसको फॉलो करें। हमारे साथ IMD मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से इस बार इफ्फी में कई नए आयाम जोड़े गए हैं, किस तरह से आप देखते हैं उन्हें? क्या आयाम जोड़े गए सर? जैसे आपने दिव्यांगों के लिए प्रयास किया है, आपने कैमपेन शुरू की है, जन जन तक फिल्मों को पहुंचाने की पहल शुरू की है। देश की युवा बात को छोड़ दिया।
75 जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ये एक ऐसी पहल जो पिछले वर्ष शुरू की गई, जहां देश के कोने कोने से, ग्रामीण अंचल से भी युवाओं को चुना गया और 10 ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में चुना गया। आप देखिए, जयंता हिल्स मेघालय की बात करूं, लखीमपुर असम की बात करूं, बाकी जगह से छोटे छोटे शहरों से आज वो उन बच्चों को अवसर मिल रहा है जो शायद इतने बड़े लोगों से मास्टर क्लास नहीं ले पाते, जिनको दूर से भी देखने का अवसर नहीं मिलता, आज उनको उसी प्लेटफॉर्म पर आने का अवसर मिला। आप कल्पना कीजिए अगले 10-20 साल में ऐसे 1.5 से 2,000 युवाओं को जब अवसर मिलेगा, तो ये भारत के गांव-गांव की कहानियों को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। और भारत के हर गांव की अपनी कहानी है, हर समाज की अपनी कहानी है। और इफ इंडिया इज अ स्टोरी टेलिंग कंट्री, देन वी हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटीज? दुनिया पे कब्जा करने का फिल्म के क्षेत्र में बेहतर भविष्य, सुनहरा भविष्य है युवाओं के सामने। Thank you, sir. Thank you. so Have a much, nice Ji. evening. And what an amazing time we are having. And as we are telling you that, the festival, all the dignitaries, the celebrities who are, coming on the red carpet, being with us. And it's an amazing time we are having here. Yes. Bilkul. And with us, we have the international guest here. What a pleasure to have you here. Welcome to IFFI 2022. Thanks a lot. I think what? I don't understand when you... I just want to say, I'm just saying that I just speak French only one word. I am not really sure if I pronounce it correctly. It is bourgeois. Bonjour. Oui. Is that okay? Okay. So I'm pleasure to have you. Bourgeois to you as well. Bonjour. Bonjour. Okay. So I think that's a very, and I need a little practice here. It's good. So France's country focus here. We were talking about France a little while ago. The kind of bond India and France have had shared. We were having a word with Honorable Minister Shri Anurag Thakurji. He was in France, in Cannes early this year at the 75th edition. And the bond we share goes beyond culture. Defense sectors we have. What do you think of that? I mean, I guess that yeah, I mean, they tend to say that cinema is an international language, etc. I guess it should also be local. Like, I don't know, like we in the jury here, we want also to discover, I think, India throughout the films that we'll see. All right, very rightly put, sir. Cinema is a global language, and it should be available to everyone, anywhere. And film festivals do exactly that, I believe. Yes, and I think also they are very important in a moment where cinema is threatened and menaced, and where the statue of cinema suddenly looks fragile and unsafe. There's something in film festivals that celebrate the fact that films and cinema is still a huge event. All right, we are minutes away from the opening ceremony. I will not hold you any further. Please enjoy the evening, enjoy the opening ceremony. Enjoy IFFI. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a dit? He said that enjoy the ceremony. No, in French. और अब अपने दर्शकों को ले चलते हैं ऑडिटोरियम के अंदर और देखते हैं वहाँ क्या कुछ। जी बिल्कुल। So, शैला, जैसा हमने देखा कि किस तरह से डिग्निटरीज और किस तरह से मेन स्ट्रीम एक्टर्स यहाँ पर अमेलगमेशन है, और आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल द वे दे हैव ब्रॉट पीपल टुगेदर, द वेरियस सेक्शंस ऑफ द फिल्म, द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द क्लाइडोस्कोप, एंड द वे दे हैव क्यूरेटेड ऑल दीज सेक्शंस, द वेटरन फिल्म मेकर्स, द यंग बडिंग फिल्म मेकर्स, एवरीबडी इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल। और गोवा में हम देख सकते हैं किस तरह से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इफ्फी का खुमार है लोगों के ऊपर। हम गोवा की सड़कों से लेकर हर तरफ इफ्फी ही इफ्फी है। इफ्फी के जिस तरह से गोवा को सजाया गया है वो अपने आप में बहुत कुछ खास एक कहानी बयान करता है। Absolutely, and on that note, I would like to welcome on red carpet. Joining me here is amazing to have you here. Good evening. Thank you so much. Welcome to IFFI. Thank you. Well, we were just having a word about the way we have opened up in the post-pandemic time, and people coming together. I think it's an amazing feeling and amazing times for the global cinema.
I think it's not just people. I think it's all cultures all over India also coming together, and that is why I'm here. I'm representing my state. I'm representing my culture, that is Maharashtrian culture, and I am super excited to be performing today because, as you see, all the acts today are designed in a way where we are kind of giving a tribute to every state from India. I mean, you know, be it Bengali or every cinema for that matter from India. Bengali hai, there is South, and then there is this one act जहाँ पे बिहू डांस भी मैंने देखा, और मैं of course I'm representing the Marathi culture, तो मैं बहुत तड़का और बहुत entertainment लेकर आ रही हूँ stage पर. And as you very rightly said, IFFI Goa has been such a special occasion where the who's who of the industry come, not only from India but also, you know, outside India, and it's a great place to be. I think I'm sure you would agree with me that when it comes to cinema, it acts as a very, very important tool for national integration, because things which we are generally not aware for whatever reasons, for our ignorance, but cinema kind of introduces it to the every nook and corner of the country. I think it's an amazing tool for national integration. Absolutely, and I think anything that kind of entertains people and also brings cultures together, I think my vote goes to that, you know. And cinema has always been doing that. It has always crossed not just countries but boundaries, and it is beyond our imagination sometimes. And I think we should welcome that. And post-pandemic, I think as people, as human beings, we should be welcoming all such things with open arms. Like we have a section in collaboration with UNICEF which encourages films with the theme on children. Yes. Absolutely, and I think you know, with what happens is, because our industry is so glamorous, our films and cinema is so glamorous, people tend to forget the kind of humanity that also comes with you know, with this responsibility of entertaining people. And I think the collaboration that you're talking about is such a beautiful thought. And in collaboration with IFFI, I think it's amazing that we are not only entertaining people here, but we're also kind of lending a helping hand towards people, those who are in need. I think generally Indian cinema has been very careful when it comes to filmmaking, that, you know, how to mix as far as, you know, entertainment quotient is concerned, also keeping the message point also in mind. I think we are very, very sensitive people. We love our films, but we want to hold hands when you know, times are tough. And I think COVID has been the biggest example of showing what a human race can do. And I think you know, everything has to go hand in hand. And today, after COVID, after pandemic, we are more sensitive, we are more empathetic towards each other, and that is what it shows in our films. Thank you so much for talking to us. Enjoy the evening, enjoy the grand opening ceremony. Temperature is rising, excitement is high. और किस तरह से आप देखते हैं, आप कैसा फील करते हैं? So I'm very excited, and talking to all these dignitaries has made me all pumped up, because, you know, be it the focus country France, be it film from any other part of the country, the Spanish legendary filmmaker, the Polish films, the Kazakh films, there's so much you know, offering from the festivals, that I am so excited. I cannot wait for the opening ceremony to start. बिल्कुल, तो हम यहाँ पर सिनेमा की उत्कृष्टता का जश्न मना रहे हैं। इफ्फी का 53वां संस्करण अपने आप में बहुत ख़ास है। ये जहाँ सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुँचाने का काम कर रहा है, तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को यहाँ दर्शाया जा रहा है। Of all the people that have spoken, you must have noted this one point, that the kind of connection that we have with the films is so brilliant, because as we grow, we all love storytelling, and cinema is kind of, you know, it takes to the full crescendo when it comes to cinema. और हम यहाँ रेड कारपेट पर वेलकम करना चाहेंगे अक्षय। We have our international guest joining here on red carpet. Welcome to IFFI 2022. Hello, we are very happy to be here from Spain. So, many congratulations for the Spanish legendary filmmaker getting the Lifetime Achievement Award here. Yes, we are so happy. He's one of our best directors, film directors, and I think he loves India. So he would be very happy that he has got this beautiful award. We are equally happy. We are absolutely in awe of Mr. Sora's films, the way he uses symbolism, the way he uses metaphors. The Spanish film industry is globally loved, and so in India. How do you look at your connection with Indian film industry, not only just in IFFI, but in general, you know, as film lovers and filmmakers? I think we have to collaborate much more. I think India and Spain, we can do a lot of collaboration and co-productions together. I agree with that. Yes, because we love Indian culture and Indian films, and I think you also. So I think this is a kind of, we have to get this marriage done.
And football also. I love football. Which film you like most from India? Which film? Yeah. Which film? Well, I'm just, I don't know right now. I know actors that I like. Yes. Yes. Which actors? Which actor? I like, but maybe I'm a little old. So, well, what's her name that she's performing in Patan? What's her name? The actress. Radhika Apte? Radhika Madan. I love her. She's brilliant. Yes. Very happy to hear that. Amir Khan also. He came to Spain a few times, so I think he also likes a lot Spain. I would like to go across other guests. Like, what has been your experiences traveling across various film festivals, and your film? You're presenting here films. There is a full-fledged section dedicated to Spanish films here. Yes. Oh, we're very happy. Like when we come to a film festival, most of the time we feel the connection between the music and how the films, how music is an absolutely crucial part of movies. No, also in Indian cinema, of course. I think there is a strange connection between Indian films and Spanish films. The kind of energy and exuberance that we have in Spanish culture is very similar to Indian culture. Absolutely, they say all colorful choreographies and the music shares a lot with Spanish cinema, definitely, yes. And your thoughts on that, sir? He's a guitar player. Actually, we are performing tonight. All right, so Dancers and musicians that are representing flamenco. fantastic. We are looking forward to your performance. Enjoy the evening and we will enjoy your performance. Please go ahead. बिल्कुल अक्षय बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ इंटरनेशनल और नेशनल सभी रेड कारपेट पर हमारे साथ आ रहे हैं. हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं, डेलीगेट्स को हम वेलकम कर रहे हैं, साथ ही साथ तमाम फिल्म स्टार्स को हम वेलकम कर रहे हैं, तमाम डिग्निटरीज यहाँ रेड कारपेट पर आ रही हैं, उन्हें वेलकम कर रहे हैं. साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं फिल्मों की. मैं यही बात कर रहा था शैला कि किस तरह से मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री और किस तरह से इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं इस फिल्म फेस्टिवल को ग्रैंड बनाने के लिए. आई थिंक ये एक बहुत ही कमाल का साइन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए. किस तरह से इफ़ी ने ऑल एनकम्पासिंग एक जो अप्रोच रखी है वो आई थिंक काबिल तारीफ है. बिल्कुल. और हमारे साथ रेड कारपेट पर एक और गेस्ट मौजूद है. वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द रेड कारपेट. हाउ डू यू फील हियर? Good evening. Good evening. It's so nice to be here. We are happy to have you on red carpet, the Green Beauty. Thank you so much. It's such an honor that I'm performing in IFFI for the second time this year. Last year also I performed in the inauguration. Last year I represented Bengal, and this year I'm representing the entire of East. Fantastic. I think that is the theme of IFFI. It is getting from regional to national and it is all encompassing and making everything as mainstream. Your experience in the last 1 year or 2 years, your association with IFFI, please tell our viewers about that. I would say the association goes much longer. My father's film Dev Shishu with Smita Patel was here. My mother's film Anu was here. They both are filmmakers. My own film Onna Apala and Brahmajan and Gopun Committee has been there in official selection. This year I'm performing. Last year also I performed, but मेरा तो IFFI में आना होता रहता है क्योंकि हमारी फिल्मों को सिलेक्शन मिलता रहता है and by God's grace लोगों को पसंद आता है. बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि किस तरह से सिनेमा जो है रीजनल सिनेमा हो चाहे नेशनल सिनेमा वो सब एक सिनेमा है. जिस तरह से ऑनरेबल मिनिस्टर भी इसमें बात कर रहे थे कि लैंग्वेज की कोई बात नहीं होती, फिल्म और थीम उसका होता है जो सबको अपील करता रहता है. एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू, बट आई विल नॉट कीप यू लॉन्ग फ्रॉम हियर फ्रॉम द ओपनिंग सेरेमनी. एंजॉय द ओपनिंग सेरेमनी. थैंक यू सो मच. बिल्कुल. और हम बात कर रहे हैं सिनेमा की सुंदरता की, और हम वेलकम कर रहे हैं तमाम डिग्निटरीज को. और हम बात अब हमारे साथ कुछ ही देर में कार्तिक आर्यन होंगे, युवा स्टार कार्तिक आर्यन. उन्हें हम बात करेंगे, उनसे उनके थॉट्स जानना चाहेंगे. उससे पहले जी बिल्कुल आपने सही कहा कि किस तरह से यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स की भी मैं बात कर रहा था और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की जो बात कर रहा था, वो एक साथ जो यहाँ पर आए हैं एक मंच पर इस फिल्म फेस्टिवल को एक सुपर सक्सेस बनाने के लिए, वो ना सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि इट इज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी. बिल्कुल. और हम जब बात सिनेमा की करते हैं तो सिनेमा और ख़ासतौर पे IFFI की बात करें तो एक लंबा इतिहास रहा है IFFI का. और जिस तरह से 2004 में जब ये गोवा में आया, उसके बाद से ये जो सुरम्य नगरी है ये इसका अपना दूसरा घर बन गया एक तरह से. इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि गोवा की जो अपनी एक एनर्जी है, गोवा का ये जो वेन्यू है, इट इज़ सो अप्रोप्रिएट फॉर अ फिल्म फेस्टिवल लाइक IFFI बिकॉज गोवा इज़ वेरी रिसेप्टिव. It's very, very comprehensive as far as culture is concerned, and we are so happy that Goa is the permanent venue for IFFI.
चला एक बात और, जैसे हम पहले मैं आपसे बात कर रहा था इस बारे में कि फिल्मों का कनेक्शन, स्टोरी टेलिंग का कनेक्शन हम सबके साथ रहता है। किस तरह से आपका फिल्मों के साथ कनेक्शन रहा था जब आप एज ए यंग आर्टिस्ट मीडिया में आई हैं? देखिए, स्टोरी टेलिंग की अगर आप बात करें तो हर भारतीय कहीं ना कहीं स्टोरी कहानियां सुनकर बड़ा होता है और कहानियां सुनकर ही उसकी शाम बीतती है। और उसके बाद जब वो वही कहानियों को फिल्मों में देखता है, फिल्मों के जरिए अपनी छवि देखता है, तो उसे कहीं ना कहीं बहुत खास लगता है, बहुत जुड़ाव लगता है। और अभी हम देख रहे हैं हाल के समय में वही कहानियां, वही फिल्में ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, जो आमजन से जुड़ाव रखती हैं, जिनका लोग अपने साथ कनेक्शन महसूस करते हैं। Exactly, we were talking to the international guest, and some of them mentioned like films like RRR, which have very strong ethos, very strong Indian ethnicity. तो चलिए अक्षय, अब हम सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को ऑडिटोरियम में और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। Enjoy it. Opening ceremony of Geo True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free now only on Voot. हर साल की तरह इस साल भी इफी दुनिया भर की फाइनेस्ट फिल्म्स और वर्ल्ड सिनेमा के स्टेलर क्रिएटर्स को एक साथ लाया है. So let's begin and let's invite our dynamic host on stage. He is a very talented actor. He is at the top of his game when it comes to singing, writing, composing, and mind-blowing hosting. Please give a big round of applause for the maverick entertainer, a talent who is loved by millions in India, an actor par excellence, jise aata hai mehfil ko sajana, the very amazing Apar Shakti Khurrana! हेलो गोवा, क्या हाल चाल है सबके? ओ माय गॉड, व्हाट अ हाउसफुल. और कोविड के बाद ऐसा हाउसफुल पहली बार देखा है. सो टच वर्ड, आई थिंक गुड थिंग्स कमिंग अहेड. सो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि इस जबरदस्त शाम को होस्ट करने के लिए आपको लगा मुझे पड़ेगा बुलाना. हाय, माय नेम इज अपार शक्ति खुराना. इट इज इंडीड अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ सच एन अमेजिंग ऑडियंस. And hello and welcome to the prestigious Geo True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa. Streaming free on Voot, Colors and Color Cineplex, brought to you by India's Information and Broadcasting Ministry and NFDC, and hosted by Government of Goa and Entertainment Society of Goa. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए. And tonight's event is directed and produced by Wistcraft Entertainment Agency. And you know what? As a young boy, I used to eat, breathe, and love cinema. And now, to host an evening that marks the biggest celebration of cinema from across the world is a dream come true. So thank you for having me over. Tahe dil se shukriya aap sabka. Ladies and gentlemen, we have a lot in store for you today. But, before we begin, सबसे पहले करते हैं इस देश को प्रणाम, करेंगे सर्वप्रथम भारत माँ का सम्मान. Hence, I request everyone who all can to please rise for the national anthem.
today. देखो अब सिनेमा कहूं या मोशन पिक्चर, इसका नाम लेते ही चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है. There are only two types of people in this world. ये जो दुनिया है ना, दुनिया, इसमें केवल दो तरह के लोग होते हैं. One who loves cinema and the other who only loves cinema. Because movies make everything all right. Believe me, to feel better, you don't need a medicine. एक मूवी का सीन ही असर कर जाता है. और हम इंडियंस अपनी फिल्म्स में बहुत प्राइड लेते हैं. You know what? क्योंकि फिल्म चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, पंजाबी, तेलुगु, भोजपुरी या फिर तमिल, हम उसकी सक्सेस पे ढेर सारी सीटियां बजाते हैं. बहुत लंबा सफर रहा है हमारी इन सभी फिल्मों का. From no color to the cinema full of colors. From no dialogues to the biggest dialogue bazi. From simple cinematic frames to visuals loaded with animation and VFX. From Raja Harishchandra to RRR. दादा साहब फाल्के साहब ने अपने हाथों में कैमरा क्या पकड़ा, रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन ने ऐसी हवा पकड़ी कि आज हर घर में बच्चे कैमरा उठाकर सिनेमा बनाने की सोच रहे हैं. We now live in a world where we create cinema and definitely cinema creates our world. Please एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इस सिनेमा के जगत के लिए. One of the finest makers, actors, directors, writers are here. And that's why हम यहाँ पर आए हैं to celebrate the joy of cinema in a fabulous magical land called Geo True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free now only on Woot. So from today to the 28th of November, we will be showcasing some amazing films to you all from across the world, and believe me, these 9 days will be the most memorable 9 days of any cinema lover's life. And that is a promise of those who have made this fantastic event possible. Give it up for the Directorate of Film Festivals of the Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with the Goa government. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए. And thank you Goa government and IFFI for providing us this fabulous platform and getting us all together. Okay, so मुझे लग रहा है रूम में एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है. काफी ज्यादा माहौल बन रहा है. So ladies and gentlemen, now it is time to kickstart the opening ceremony on a grand note. You know what? In India, every important occasion begins by inviting and worshipping Lord Ganesha. That is why we say, उत्सव बिना गणेश जी के लगता हमें अधूरा है. प्रथम वंदना अगर उनकी ना हो तो कोई भी काम नहीं होता पूरा है. तो चलिए गणेश वंदना प्रस्तुत करने आ रहे हैं the one who keeps her eyes on the stars and feet on the ground, जिनकी सिग्नेचर स्माइल करोड़ों इंडियंस के दिल की धड़कन बन चुकी है. Please welcome the actress who's racing to the top, one of my favorite actresses in the country. Please give it up for Mrunal Thakur. Jai
TP. Oh my God, what a performance. Give it up for Mrunal Thakur. Light represents the positive, the good and the good spirits. It symbolizes truth, knowledge and understanding. By lighting a lamp, the lamp becomes a form of fire and it ensures success. Hence, now I request the honorary dignitaries to please come on the stage and light the traditional inaugural lamp. Can we please have all of you on the stage? Shri P.S. Sridhan, Honorable Governor Goa. Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union I&D Minister. Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State. Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister Goa. Mr. Puneet Kumar Goyal, Chief Secretary Goa. Mr. Apurva Chandra, Secretary of Information and Broadcasting. Steering Committee members, Bobby Bedi, Ms. Rishita Bhatt, Nikhil Mahajan, Prasoon Joshi, Ravi Kottakara, Shujit Sarkar and Vani Tripathi. And Mr. A.K. Beer, Technical Committee Chairman. May I please request all of you to light the lamp. I wish with all my heart that this light brightens up the path for world cinema for years to come, and may it guide us towards a path of telling some compelling stories which fills the hearts and lives of our audiences with hope and happiness. इफ़ी को और शुभ बनाने के लिए ये शुभ लाइट जलानी अति आवश्यक है. Thank you so much, everyone. Thank you so much for doing the honors. Okay, so ladies and gentlemen, this edition of the festival promotes the art of film by providing a unique platform showcasing the best of cinema and providing an elevated cinematic experience with the power of Jio True 5G. इसलिए आगे बढ़ने से पहले to extend a formal welcome to all our distinguished guests, delegates and dignitaries, may I invite on the stage the Secretary of Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Shri Apurva Chandra. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan ji, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant ji, Minister of State, Shri L. Murugan ji, and all of those present here who are in the business of creating the magic of movies, and the others like me who are fans and enjoy and immerse themselves into the magic of movies. I welcome all of you to the 53rd edition of IFFI. Before I begin, I would like to read a special message from our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for this event IFFI. So this is a special message from our Honorable Prime Minister. It is heartening to learn about the 53rd edition of International Film Festival, organized jointly by the Ministry of Information and Broadcasting and Government of Goa from November 20th to 28th, 2022. For over a century now,
Cinema has captured the imagination of people the world over. Cinema reflects the social dynamics of our times as well as shapes it. Films have a unique ability to transcend barriers and establish an emotional connect with the audience. Movies entertain, educate, or even inspire people through their powerful storytelling. Their efficacy in becoming a vehicle of social transformation is truly unparalleled. India is blessed with a rich and diverse culture, an amalgamation of tradition with the modern. The history and art of storytelling in various Indian languages, ranging from prose, poetry, music, dance, plays, dramas, to cinema, enables us to celebrate our vibrant socio-cultural landscape. IFFI and Indian cinema have carved out a niche for themselves on the global stage. Films in different Indian languages are reaching out to a larger international audience and are being increasingly appreciated across the world. As the biggest film festival of India, IFFI promotes an invigorating synergy between delegates from different nations and societies united by cinema. I am sure that the interactions within this mini world congregating at Goa will facilitate deeper understanding and new learnings in the world of art. With its beautiful nature and vibrant culture, Goa provides the perfect backdrop to host the IFFI. I am sure that Goa will spur the creative imagination of the participants, inspiring them to come up with new ideas to help cinema expand its outreach to an ever-growing audience. Best wishes to everyone associated with the film festival. May the 53rd edition of IFFI be a resounding success. Signed, Narendra Modi. So after the inspiring words of the Honorable Prime Minister, where he has expressed confidence that IFFI will facilitate deeper understanding and new learnings in the salubrious state of Goa, I would only add that IFFI is a platform for Indian film industry to showcase its best before the world and to imbibe the best practices in cinema from the rest of the world. This year, our Honorable Minister, Shri Anurag Thakurji and Shri Muruganji visited Cannes Film Festival. And India was the first country of honor at the Marché du Cannes. We learned a lot from that visit, and this year we have tried to imbibe the learnings into the IFFI at Goa. This and that you can see when the film market is going to be inaugurated tomorrow, where we have several countries, states, and industry pavilions being put up. This is the first time ever that such a large participation is there. Very smart pavilions have been put up by France, Dubai, Russia, and many state governments. And I'm happy to announce that we have kept the entry open, not just to the delegates of the film market, but also to the delegates of the film festival, and also to the public of Goa between 3 and 6 p.m. every day. So we would like more and more people to come and visit this first ever effort at Goa. More than anything, a film festival is about films. This year, 280 films from 79 countries, 183 films will be part of the international programming. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी स्टीयरिंग कमेटी का, जिन्होंने इस बार बहुत मेहनत से इन फिल्मों को चुना है, और मुझे आशा है कि जो लोग फिल्मों के कॉनोसियर्स हैं, जो फिल्मों को देखेंगे, वो फिल्म्स को अप्रिशिएट करेंगे कि इस बार की फिल्मों में कैसे बदल आया है, और हमारा जो गोवा का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो बढ़िया से बढ़िया होता जा रहा है. सो शेवटी मी असं म्हणेन की 2 वर्षापर्यंत कोविड होता. या वर्षी आपण कोविड
कोविडमधून निघालो आहोत आणि या वर्षीच्या इफी जे आजपर्यंतच्या इफी आहे त्यापेक्षा चांगला आहे आणि यापुढे दरवर्षी मी हमी देतो की यापेक्षा चांगला होत जाणार आहे. धन्यवाद. Thank you so much, sir. And now I would like to request the Honorable Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. L. Murugan, to share a few words. Please welcome him on the stage. Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pillai Ji, Honorable Minister of Information Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Singh Thakur Ji, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant Ji, Secretary INB Sri Apurva Sandra Ji, and senior officers from Ministry of Information and Broadcasting, government officials from Government of Goa, ESG, and team NFDC. And the stars, celebrities here, our parliamentarians here, filmmakers, juries, actors, directors, and all personalities associated with the world of cinema, delegates, guests, friends from media, ladies and gentlemen, namaste, vanakkam to you all. Welcome to this Asia's biggest film festival, the 53rd International Film Festival of India at Goa. Over the next 8 days, the film-loving delegates coming from all across the globe will enjoy the best of India and the world cinema. Away from the side of global COVID pandemic, this 53rd IFFI will be back to its vibrant festival, Avadar. Mr. Carlos Saura, the famous Spanish film director and writer, has been selected for this year Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 2022. Mr. Saura, congratulate to you. Your contribution to the world of cinema over last 50 decades is unparalleled. I pay my respect to late Lada Didi, Pandit Birju Maharaj, and Tabussam, many others from the film fraternity who left us in last 1 year. We remain indebted to you forever. Ladies and gentlemen, in 1913 was the year when India started our journey in the world of cinema. Our movies picked the threads from our rich history and culture, our diverse regions and languages, and created the Indian cinema, whose influence today transcends beyond boundaries, beyond culture, and beyond language barriers. Sri Dada Sahib Palke ji, Sandaram ji, Sri Raj Kapoor, Satyajit Ray, MGR, Shivaji Ganesan, N.T. Ramarao, Dr. Rajkumar, and many others have literally carried the movie world over their shoulders, and today many from the distinguished audience here are able continuing this tradition. The journey started with Raja Harishchandra and traveled through Do Bigha Jameen, Bandini, Kagaz Ke Pool, Veerapandiya Kattabomman, Padagoti, and other gems. These movies become the milestones in the journey, enhancing the appeal of Indian cinema the global scale. Friends, it is motto of Vasudeva Kudumbam. The whole world is the family. The IFFI has been erasing boundaries within the world of art and film. This allows the different film cultures to engage with each other, explore the possibilities to collaborate and promote
understanding the social and cultural ethos of world of cinema. The IFFI is about celebrating and releasing good cinema. Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji has described the IFFI as the film festival that promotes an synergy between delegates from different nations and society united by cinema. The 53rd IFFI has everything that a true movie lover wanted, that Indian panorama, master classes, books to box office sessions, film bazaar, 75 creative young minds, and most importantly, the best of world cinema are lined up in this edition of IFFI. Honorable Minister Sri Anurag Singh Thakur ji is leading the front to establish India's position as the content hub of the world. Many initiatives like incentives for co-production in India, streamlining single-window film facilitation service, incentives film shootings in India, tapping the huge AVGC potential and marching ahead under his able leadership. Let me also acknowledge the great contribution of state of Goa. Let Sri Manohar Parrikarji's sustained effort made Goa as the permanent venue of IFFI. I salute his vision. The Goa state under the dynamic leader of Chief Minister Sri Dr. Pramod Sawant has put his tremendous effort to make this IFFI 53rd successful. Dr. Pramod ji, your concerned support for this cause is great source of strength of the IFFI. This warmth and hospitality of Goenkas is world famous, so enjoy the Goengan hospitality and get immersed in the IFFI. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vanakkam. Thank you so much, Murugan sir. Always great to hear your thoughts. And now it is time to felicitate our international jury of this year. For that, I would like to request our Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to please come on the stage. The international jury for the festival chose a total of 15 films this year, 12 international and 3 Indian films to compete for the prestigious Golden Peacock Award at Geo True 5G Presents 53rd edition of the International Film Festival of India, Goa, streaming free now on Woot. As we know, each year, a group of renowned filmmakers and cinema experts come together from different parts of the world to form the international jury who take responsibility of judging films. May I please request them to come on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome the members of our international jury, Israeli writer and film director Nadav Lapid, French film editor Pascal Chavins, Spanish documentary filmmaker, journalist and film critic Javier Angelo Borteren,
All right, the aim of the Indian Panorama, organized by National Film Development Corporation, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, is to select feature and non-feature films of cinematic and thematic and aesthetic excellence. From hundreds of entries this year, 25 feature films and 20 non-feature films will be showcased. I would like to first introduce the feature film jury of the year. The feature film jury is headed by the acclaimed director and editor, chairperson, Sri Vinod Ganatra, along with 12 distinguished film personalities. And they are Ashok Kashyap, Ananda Jyoti, A. Karthik Raja, Dr. Radha Singh, Anumala Prem Raj, Emo Singh, Jugal Debata, M. Geeta Gurappa, Shailesh Dave, Shibu G. Susalan, V. N. Aditya, and Vishnu Sharma. Please give a huge round of applause for the feature film jury of Indian Panorama. And now let me introduce the non-feature film jury of this year. The non-feature film jury is headed by the acclaimed producer, writer, and National Film Award winner, chairperson Sri Oyanam Doren, along with 6 other distinguished film personalities. And they are A. Chandrasekhar, Harish Bhimani, Manish Seni, P. Umesh Nayak, Rakesh Mittal, Sanskar Desai. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the non-feature film jury of Indian Panorama. और अब बारी है एक बहुत ही अहम शख्सियत को स्टेज पर इनवाइट करने की. गोवा की शान, इफ़ी की शान, the man of the hour, who never ceases to amaze us with his dedication and visionary approach. Please welcome the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Very warm welcome to each one of you who are here to witness the 53rd International Film Festival of India in our beautiful state of Goa. At the onset, I take this opportunity to welcome Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pilleji, Union Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakurji, Union Minister for State for Information and Broadcasting, Dr. L. Muruganji, Union Minister for State for Tourism and Ports, Sri Sripad Naikji, Secretary for Information and Broadcasting, Sri Apurva Chandraji, special guest for the inaugural today, Sri Ajay Devganji, Sri Sunil Shetty ji, Sri Manoj Bajpayee ji, Sri Prabhu Deva, Sri V. Vijayendra ji Prasad, Sri Pankaj Tripathi, Miss Shreya Saran, members of the jury, my cabinet colleague, Member of Parliament, Sri Vinay Tendulkar ji, Member of Legislative Assembly, Chief Secretary Sri Puneet Goyal ji, Member of NFDC, Member of Steering Committee, CEO and Governing Body members of ESG, all the respected dignitaries from the film industry across the world who have gathered here, the member of the print and electronic media, and my brothers and sisters. We are at that time of the year when the filmmakers and enthusiasts from all over the globe are extended a warm welcome in our beautiful crown jewel of the Indian subcontinent that we all call Goa. Most of you have been constantly visiting Goa. For those who are here for the first time, let me reiterate that you are in that part of the world where you can experience pristine seashore, peaceful hinterland, divine pilgrim sites, mesmerizing backwaters, mouth-watering cuisine, and most importantly, very warm and hospitable people. At this moment,
as the curtains will be raised on 53rd IFFI, let us fondly remember our former Chief Minister, late Sri Manohar Bhai Parrikar, who translated his vision into reality and allowed Goa to be the permanent host for this extravaganza. The Government of Goa and the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, are jointly executing this festival through Entertainment Society of Goa and National Film Development Corporations between November 20th to 28th. This year, the state government has taken the initiative to curate the special masterclasses for Goan film fraternity. Renowned personalities from Hindi and Marathi film industry will be addressing masterclasses. A special Goan section has also been curated this year. A jury panel comprising of 3 members from Indian Panorama and who formed the jury for Goan section has selected 6 short films and 1 documentary film. We have been able to draw the attention of substantial number of tourists as well as the local public towards this program. Therefore, to enhance the participation of Goan and tourists, we have also curated the various peripheral activities such as the Festival Mile, Heritage and Entertainment Zone, etc. Festival Mile will have the parade of glimpses of Shimgotsav and Carnival on 26th and 27th November. Caravans will be deployed throughout the Goa and popular movies will be screened for the masses. Open air screening to be carried out at Miramar Beach and also at the Joggers Park Altino and Ravindra Bhavan Margao. With the intention to make this event more inclusive, a special movie screening section has been curated for Divyangs along with the workshop in film and entertainment. We have tried to strike a balance for the film and entertainment industry with the general public for curating this festival. The opening and closing ceremony will see as many as 14 cultural performances featuring the top film celebrities from across India and will also include the music and dance group representing the France, Spain and Goa as well. As you all may be aware, India is celebrating 75 years of its independence. Therefore, in this Amrut Kal, the theme of the opening ceremony will be evolution of the Indian cinema in the last 100 years under the Azadi Ka Amrut Mahotsav celebration. As the Chief Minister of Goa, I take this opportunity to extend heartfelt gratitude to the Government of India under the able leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for the relentless support and guidance that his entire cabinet is extending the efforts of the Goa government in making the Goa one of the best performing states in terms of the relevant parameters and indicators of infrastructure development as well as the human development. Specifically, I would like to mention the support extended by Sri Anurag Singh Thakur ji and Dr. L. Murugan ji, the time and again in the successful organizing of this grand event. Dear friends, our Entertainment Society of Goa, in this nodal arm of our government, which provides the assistance to the stakeholders in the film industry in terms of conducting the shooting in the state of Goa. I am aware that the Goa, with its tremendous natural treasure, is the most ideal place for the film shooting behind Mumbai. I am also aware of the issue that our line producer come across while actually conducting the shooting, and I assure you of all the possible support from the government of Goa in this regards. I am also glad that the film culture is
strengthening its roots in our state, and some of our youngsters have started making their presence felt in the industry, may it be in the film or in an OTT platform. With the best rail, road, water and air connectivity with all parts of the country, and increasing pool of the trained and talented actors, writers, technicians, etc., Goa is your most ideal destination for the film shooting as well as the post-production. My government will promote the creations of an entire ecosystem required for making the films. Our aim is to create the hub with the world-class production, post-production and training facilities for the global media, entertainment and IT industry. Setting up of state-of-the-art film school will provide the opportunities to the Goan youth to acquire the required skills and education to become the eligible for the employment opportunities. I call upon the producer and investors to come forth and invest to scale up the film-related infrastructure in Goa, for which my government is committed to provide the necessary assistance. Very soon, my government will come out with a comprehensive policy and hassle-free action plan for the same. A long-pending dream of creating the permanent venue for the International Film Festival of India is become a reality. Setting up of the world-class convention center with multiplex and other associate infrastructure in an area of 25 acres is at the final stage of awarding the project on the PPP basis. Hopefully, in the year 2025, we will be able to celebrate the IFFI at the new venue. I wish all the delegates a very pleasant stay and also the very enriching experience through the various symposium, panel discussion, etc. at a part of the 53rd IFFI in Goa. समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा आयच्या IFFI इनॉग्रलाक तुमकां खूब खूब स्वागत करता आनी आमच्या मदीं आयिल्ले सगळे आमचे गेस्ट माननीय अनुराग सिंग ठाकूर जी, अजय देवगण जी, सुनील शेट्टी जी हांचे नेटान ताळयो मारून तुमी गोंयच्या हातूंतल्यान सगळ्यांनी स्वागत करचें आनी परत एकदा IFFIचो आस्वाद घेवपा खातीर फुडले 9 दीस आमकां इंटरॅक्शन करपाक मेळटलें. वेरियस फिल्म इंडस्ट्रींतल्या एक्टर्सां कडेन, डायरेक्टरांसां कडेन ही गोंयकारां खातीर, आमच्या तरणाट्यां खातीर फिल्म इंडस्ट्रींतली बऱ्यांतली बरी संदी आसा. तिचो फायदो आमी सोडचे ना. जय हिंद, जय गोवा. Thank you so much, sir, for inspiring words. But sir, please stay back, sir. If you can please stay back on the stage. Thank you so much. And I would also like to call upon the stage Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Minister of State, Ministry of I&B, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, Dr. L. Murugan, and Honorable Governor, Goa, Shri P.S. Sridharan, to felicitate our honorary dignitaries today. Can we please have you on the stage, sir? कुछ लोग हैं जो सिनेमा में आते ही, कुछ लोग होते हैं जो सिनेमा में आते हैं और कुछ लोग जो सिनेमा कहलाते हैं. इनकी प्रेजेंस और एफर्ट्स के बिना शायद इंडियन सिनेमा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जो जहां अभी तक पहुंचा है. These personalities are very special to the country and they have definitely some greatness in them. अब जिन्हें बुला रहा हूं वो अपने आप में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग है. ही हैज बीन अ फ्लैग बेयरर ऑफ गुड सिनेमा इन आवर कंट्री. लोग कहते हैं कि यार मनोज बाजपेयी इस फिल्म में, फिल्म डेफिनेटली अच्छी होगी. प्लीज वेलकम 3 times नेशनल अवार्ड विनर पद्मश्री मनोज बाजपेयी जी.
मनोज सर आपसे एक सवाल है, प्लीज एक सवाल है सर, आपको बिना बात के नहीं जाने दूंगा सर मैं। मेरी पहली फिल्म वैसे लोगों को लगता है दंगल थी, लेकिन 7 उचक्के मेरी पहली फिल्म थी और मैं तब से सर को चरण स्पर्श करता हूं हर बार। सर ये जानना चाहता हूं, यू नो देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन सिनेमा, जो तब का से पहले का सिनेमा था और जो आज का सिनेमा है बहुत बदल चुका है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि हाउ डू यू सी दिस चेंज सर, क्या बदल चुका है जब से आपने स्टार्ट किया था और आज यू नो जब हम देखते हैं आपको? Yeah, I'm not that old. Question. सर सिनेमा जो है बहुत बदल चुका है, जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक, तो आपके हिसाब से क्या बदला है सिनेमा में? आपने क्या देखा है अपनी जर्नी से? नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और तकनीक बदला है, सिनेमा कहानी कहने का ढंग बदला है। अभी हम लोग फ्लाइट में थे, मैं और परेश भाई और सुनील शेट्टी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि आज सिनेमा जितना डेमोक्रेटाइज्ड हो गया है, जितना अलग अलग जगहों पर जा चुका है, हर कोई जो कहानी कहना चाहता है आज कहानी कह सकता है और हर कोई प्रतिभा कहीं से भी आ सकता है और वो एक मकाम बना सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की डेमोक्रेसी और इस तरह का कंटेंट का भरमार और इस तरह की प्रतिभा की भरमार शायद फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार देखा है। ये अपने आप में बड़ा सुखद है और मुझे खुशी होती है कि इस देश के किसी भी कोने से एक बड़ी प्रतिभा आती है और अचानक रातों रात छा जाती है, एक सबसे बड़ी बात है। क्या बात है। थैंक यू सो मच मनोज सर, कंग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, प्लीज स्टे देयर सर। यस। एंड नेक्स्ट जिन्हें हम ऑनर करने वाले हैं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूंगा अभी। We all lovingly call him Anna, which means elder brother in Telugu and Tamil, of course. Over 100 films, over 30 years of great performances where he has inspired the young generation about fitness and mental health. Please give it up for our beloved Anna, Sunil Shetty. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सुनील सर, आपसे भी मेरा एक सवाल है, ये डी एजिंग का क्या फॉर्मूला है सर? आप जितने भी लोग इस समय हैं ऑडियंस में, मुझे बताएं अगर इनकी अगर लगता है कि ये बूढ़े हो रहे हैं, आप छोटे ही होते जा रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, आई थिंक खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरों की खुशी में मेरी खुशी है। वाह। यू नो, मैं चाहता हूं कि सब अच्छा बने, सब अच्छा करे एंड यू नो एज एन इंडस्ट्री हम ग्रो करें। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ट्रेनिंग, जैसे अजय हमेशा कहता है कि सिर्फ 2 जन हैं जो इंडस्ट्री में जल्दी उठते हैं, एक दूध वाला है और दूसरा सुनील शेट्टी। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट अप we would like to honor the man जिनकी वजह से हीरो की एंट्री सिनेमा में और भी इंटरेस्टिंग बन गई। आता माझी सटकले, समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। ऑलरेडी तालियां बज चुकी हैं, क्या ही देता हूं, जोर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए जिसमें है दम, वो है फक्त हमारा बिलव्ड अजय देवगन। गिव इट अप फॉर पद्मश्री अजय देवगन। अजय सर, आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा। आप पहले माइक ले लीजिए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन ह्यूज नंबर्स ऑफ दृश्यम 2। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू सो मच। एंड सर, सर
बहुत कम लोग हैं जो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोड्यूस भी कर पाते हैं। अगर आप तीनों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा आपको क्या है, डायरेक्शन, प्रोडक्शन या एक्टिंग? आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। जब एक आर्ट लवर होता है वो किसी एक चीज़ पे पिन पॉइंट नहीं कर सकता। फिल्म्स इन टोटलिटी आई वुड से, हर डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट उतना ही ज़रूरी होता है फिल्म मेकिंग में, और किसी एक डिपार्टमेंट के बिना फिल्म अच्छी बन नहीं सकती। सो बेसिकली आई लव मेकिंग फिल्म्स, एंड दैट कुड बी एक्टिंग, दैट कुड बी डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग, एवरीथिंग। So there's so many people in this audience जो filmmakers बनना चाहेंगे, actors बनना चाहेंगे. A quick, word of advice for them. I don't think anybody can give any advice to anybody. Follow yourself, and I think believe in yourself. That's the most important thing. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, please give Thank it up for Ajay Devgan, sir. Thank you so much, sir. अक्सर जॉनर एक एक्टर की एक्टिंग को ना डिफाइन करता है, बट जिनको मैं अगले अब मंच पे बुलाने वाला हूं वो एक्टर ऐसे हैं कि खुद ही जॉनर बन जाते हैं. द मैन हु हैज इमॉर्टलाइज्ड 1 million कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन, कॉमेडी हो या नेगेटिव रोल या फिर लवेबल बाबू भैया, तेजा बन के इन्होंने इंडस्ट्री पे एक मार्क छोड़ा है. My beloved actor, producer and India's most legendary Padma Shri, Paresh Rawal, sir. सर देखिए, आजकल ऐसा जमाना है कि सब लोग कॉमेडी भी करते हैं, नेगेटिव रोल भी करते हैं, सब करते हैं, ये आज का जमाना है. लेकिन आपने उस जमाने में ये सब कुछ कर दिया था सर. आई रियली वांट टू नो कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट आपने दिया है सिनेमा को, आपकी अब तक की जर्नी का क्रक्स क्या है? देयर आर सो मेनी पीपल हु आर बडिंग एक्टर्स, जो यहां पर इस समय होंगे, आपसे जानना चाहेंगे सर. मुझे फॉर्चुनेटली अच्छे राइटर मिले, अच्छे डायरेक्टर मिले, अच्छे को आर्टिस्ट मिले तो मैं कर सका, वरना कुछ रोल तो हमारे नसीब में ऐसे आते थे, अब क्या बताएं. सिर्फ पैसे नहीं होते तो हम कुछ नहीं करते, ये था. ओके सर, ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. Give it up for Paresh Rawal, sir. Thank you so much, sir. And I would like to call upon the stage Sri Shripad Nayak, Ministry of Culture and Tourism, Goa, for the next felicitation. Sir, please, can we have you on the stage, please? और कुछ लोग अपनी कलम से शब्द लिखते हैं और कुछ आइकॉनिक राइटर्स ऐसे होते हैं जिनकी कलम से इतिहास लिखा जाता है. द मैन हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, whose instrumental writing gave us hits from 1988, including the ones that became cult movies, namely Magadhira, Bahubali and RRR. Give it up for the wizard of words, Vijendra Prasad, sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. विजेंद्र सर के लिए. सर, आपसे भी मेरा एक छोटा सा सवाल है.
सर Tell सर मैं भी जो कुछ बोल रहा हूँ ये किसी ने लिखा है सर, अदरवाइज हम कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं जो कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पर वो किसी ने लिखा है, वो एक राइटर ने लिखा है। हम सबका अस्तित्व ऐसे जिंदा रहता है कि आप जैसे राइटर इस देश में हैं। तो सर I'm a little hard in hearing. Sir, whatever I'm speaking right now has been written by a writer. Yeah. So we all exist because a writer writes something as spectacular as you do. Abhi Paresh Rawal sir, we was talking about this, that I got a chance to work with brilliant writers. So sir, all the upcoming writers, the budding writers, who are there in the audience, what do you want to give them, a quick advice, sir? Be inspired by Gandhiji. Can you understand? No, I mean, this Gandhiji. Be inspired. What an inspiration, sir. हम सबकी यही inspiration है. Thank you so much, sir. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए. And thank you so much, everyone, all the dignitaries, for doing the honors. Thank you so much. Oh. Thank you so much, sir. So guys, time for a fun fact. जैसे हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से विष्णु भगवान के सबसे फेवरेट, उनका जो सबसे फेवरेट महीना था वो कार्तिक था, वैसे ही आजकल बॉक्स ऑफिस पे प्रॉफिट के हिसाब से हर प्रोड्यूसर का सबसे फेवरेट एक्टर ऑफ कोर्स कार्तिक है. आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन. एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो मैं भी इंडिया के फेवरेट एक्टर से बात करना चाहता हूं. तालियों के साथ स्वागत करो प्लीज. गोवा, यू रेडी फॉर कार्तिक आर्यन ऑन द स्टेज? तो कार्तिक, बड़ी स्क्रीन पर, बड़े बड़े स्टेज पर बहुत बड़ी बातें हुई हैं, बट इफी आई थिंक इज डेफिनेटली समथिंग वेरी डिफरेंट. एक बार लोग देखो कितने हैं, ऊपर से हम गोवा में हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इफी? बहुत सारे लोग हैं यार. पूरा भरा हुआ है. बट मैं यहाँ आके बहुत एक्साइटेड हूँ और इफी में आके उसका हिस्सा बन के ऑल द मोर एक्साइटमेंट बढ़ गया है. यहाँ पे मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ आज. एंड मतलब मैंने इतनी ऑडियंस अभी काफ़ी टाइम से नहीं देखी एक साथ. सो आई एम सो हैप्पी कि इफ़ी के लिए सब लोग आप यहाँ पर आए. और मेरा बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, हॉलीडे डेस्टिनेशन है गोवा. तो यहाँ आके मैं ऑल द मोर खुश हूँ. क्या बात है. सो यार, इट्स बीन अ डेकेड फॉर यू इन द इंडस्ट्री. और ये जो जर्नी रही है डेफिनेटली बहुत ही फ्रूटफुल रही है. आई हैव डन 2 फिल्म्स विद यू, सो आई नो किस तरीके की पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट है तुम्हारी. सो आई रियली वांट टू नो कि ये जो इतने सालों की मेहनत है उसको आप कैसे समराइज करते हो? आई मीन स्ट्रगल चलता रहेगा, यही समरी है पूरे. बट दिस ईयर मुझे लगता नहीं है कि भूल भुलैया 2 के अलावा आई मीन दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर. तो आई मीन जो स्ट्रगल आपने बोला है वो हम्बल तरीके से बोला है, बहुत अच्छी बात है. बट आई रियली वांट टू नो दैट द प्रोसेस एंड किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो इस मोमेंट को? मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ. आई मीन मैं हर मोमेंट को जीना चाहता हूँ और एक भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ. जो अच्छी फिल्में मिल रही हैं उनको पकड़ रहा हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स से बातें कर रहा हूँ, अच्छे प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा हूँ और अपने ऊपर मेहनत करता जा रहा हूँ. तो विद ईच एंड एवरी फिल्म आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई वांट टू बी रियली हैप्पी. आई थिंक एक बैलेंस है जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लाना चाहता हूँ, तो वो भी एक ढूंढ रहा हूँ. And Karthik, जितने लोग इस समय ऑडियंस में हैं, and of course including both of us who are also actors, I mean सब यहाँ सिनेमा के लिए हैं. So what does cinema mean to you? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. क्या बात है. एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. तो देखो ऐसा है, एंटरटेनमेंट करना कार्तिक आर्यन को भली भांति आता है. ऑन दैट नोट आई एम लीविंग द स्टेज फॉर यू. कुछ चंद मिनट स्टेज पर मैं कह रहा हूँ कार्तिक आर्यन आपके हवाले करके जा रहा हूँ. आर यू गाइस रेडी? ओके ब्रदर, सी यू इन अ बिट. मुझे भी एक्चुअली बहुत लोगों से बात करनी है यहाँ पे स्टेज पर. गिव इट अप फॉर अपार शक्ति. एक बार जोरदार. रुका वो सुनने के लिए तालियां. अजय सर, दृश्यम 2 के लिए थोड़ी तालियां हो जाए. सुनील सर, परेश जी, मनोज सर, सब लोग. मैं बस
ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे इफ़ी में आके हम सब यहाँ पे एक खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मैं बस वेलकम करना चाहूँगा कुछ लोगों को स्टेज पर। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लीडर्स ऑफ आवर टाइम्स, द फियरी, द गो गेटर, गिव इट अप फॉर आवर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन स्टेज। मैं सबसे पहले, हाँ माइक ले लीजिए सर। सर मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे, और मतलब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही है। तो मैं बस पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के मामले में ये इंडिया के लिए फिनोमिनल साल रहा है। आप इन अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो सब खिलाड़ियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, क्योंकि कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा समय था। सरकार के लिए भी किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग सेशन में डालना देश और विदेश में अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। और मीराबाई चानू के साथ तो ऐसा हुआ कि उसकी इंजरी हो गई और यूएस वीज़ा 24 घंटे से कम समय में लगाकर टिकट बुक करके अमेरिका भेजना अपने आप में चुनौती थी। लेकिन 6 महीने बाद जब वो सीधी टोक्यो गई तो भारत के लिए मेडल भी जीत कर लाई। चुनौतियां थी लेकिन अवसर भी देखने को मिले। थॉमस कप में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में 66 मेडल जीते। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी पिछले कल मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर थे और बात करते करते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिकेट की बात तो आती आती है, उन्होंने मुझे पूछा वर्ल्ड कप का मैच देखा आपने जो विराट ने क्या बैटिंग की, कैसे इंडिया जीता? मैं कहा मैं तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मैं देख नहीं पाया। उन्होंने कहा मैंने तो कहते RRR भी देखी है, क्या फिल्म बनी है। और ये कौन कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि RRR मूवी देखने के लिए। सो अब कुछ रीजनल नहीं है, देयर इज नथिंग रीजनल। इफ योर कंटेंट इज गुड, दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड ग्लोबली। सो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल इट गोes. So I think in both areas of sports and entertainment, sports and cinema, India has done a fantastic job, and I think the Prime Minister Modi has always been there for our sports lovers, motivating them before any tournament. Olympics में जाने से पहले भी और आने के बाद भी शायद किसी दुनिया के देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बात की होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अनुराग सर, आप तो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स को भी संभालते हैं, करेक्ट? तो इंडिया में तो क्रिकेट को रिलीजन की तरह माना जाता है। तो आप ये बताइए, जब मैच पे लास्ट बॉल पे टीम हारता है तो आप भी आम लोगों की तरह बोलते हैं कि अरे यार स्क्वायर कट मार लिया होता, स्ट्रेट क्यों मारना है? ऐसा होता है क्या आपके साथ? देखिए, भारत की एक बड़ी खासियत है, क्रिकेट पॉपुलर भी इसलिए है कि पान वाले से लेकर चाय वाले तक वो ये बता देगा तेंदुलकर को या विराट कोहली को कौन सा शॉट कब खेलना चाहिए था। और मुझ जैसे लोग जो जीवन में कुछ खेले, मेरे जैसे लोग कभी सलाह नहीं देंगे, क्योंकि पता है बाहर से बोलना बड़ा आसान है, लेकिन वो बीच ग्राउंड में खड़े होकर जब 60,000 लोग बोल रहे होते हैं तो प्रेशर कितना होता है, ये उतना आसान नहीं है। अगर आप इस भीड़ में से 2 लोगों को मंच पे बुलाओगे और ये मेरा माइक उनके हाथ में देखोगे तो समझ आएंगे मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सुपर्ब सर। सर इमोशन की बात की अभी आपने, और सिनेमा इज ऑल अबाउट इमोशंस। इसलिए मैं आपको कुछ इमोशंस दूंगा और आपको बताना होगा कि आपके इस इमोशन के बारे में सुनकर आपके माइंड में कौन सी मूवी आती है। रेडी हैं आप सर? मैं कोई बहुत ज्यादा मूवीज देखता नहीं, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। सर प्यार, अगर मेरे समय की बात करें, सर कोई भी समय का बता सकते। प्यार हर समय में एक जैसा ही होता है।
सर मैं गलत मैं इंसान हूं। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा फिल्म का मतलब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अब आप सीधा इमोशन पे आ गए। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया आपके सवाल पूछ के, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता नहीं, लेकिन मेरे समय में क़यामत से क़यामत तक, मैंने प्यार किया, 2 ऐसी मूवीज़ थी जो उस समय की सुपरहिट मूवीज़ थी। सर दूसरा इमोशन देता हूं, गुस्सा। सनी देओल याद आते हैं। सनी देओल, बस कोई मूवी नहीं, सीधा सनी देओल। डायलॉग मुझे बोलने नहीं आते कि 2.5 किलो का 2.5 हाथ और वो सब करना, लेकिन सनी देओल याद आते हैं। ठीक है सर। कॉमेडी, परेश भाई केम छो? मजा में मजा में। सर ट्रेजेडी। अब क्यों सबकी बात मेरे साथ कर रहे हो? ट्रेजेडी को लेके देखिए, एक और आपको उरी में दिखेगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चुनौती खड़ी हुई थी, लेकिन एक संदेश ये भी गया कि भारत बदल चुका है। अब केवल देखते नहीं, 26/11 की तरह घर में घुसकर मारने का काम भी करते हैं। क्या बात है सर। सर हॉरर। हॉरर, कईयों को अपनी बीवी याद आई होगी, कईयों को कोई और जमाना याद आया होगा, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा, वो समय किसी को जो हॉरर वाला, जैसे डरावना, कोविड का समय बहुत डर वाला था, क्योंकि कोविड के समय में महामारी ऐसी थी कि दुनिया के किसी व्यक्ति को पता नहीं था इसका इलाज क्या है। लेकिन हम तो सौभाग्यशाली निकले कि मोदी जी थे, तो कहते ना मोदी है तो मुमकिन है, तो एक नहीं 2-2 वैक्सीन भी बन गई और सबको मुफ्त में लग भी गई। और आज मैं तो पिछले साल भी प्रमोद जी यहाँ पर था, ये आधा पिछली बार भरा हुआ नहीं था, अब पूरा भरा हुआ और लोग खड़े भी हैं। तो गोवा वालों को बहुत बहुत बधाई शानदार कार्यक्रम के लिए। वो समय डरावना था, हॉरर वाला था, जब पैंडेमिक का डर सताता था, लेकिन नेतृत्व अच्छा था, तो आज खुशियों भरा समय भी आ गया है। यही अंतर है। क्या बात है सर। सर मैंने सुना था कि आप एकदम क्विकली जवाब देते हैं, आज देख भी लिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। वैसे मैं एक बात और करना चाहूंगा, मेरे सामने अजय सर बैठे हैं, उन्होंने सिखाया है दुआ में याद रखना। अजय सर, मैं आपको दुआ में भी याद रखता हूं और गोवा में भी, तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए सर। जोरदार तालियां हो जाए अजय देवगन सर के लिए। अजय सर, 2 अक्टूबर को विजय सालेस्कर विजय जी, सर मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2 अक्टूबर को विजय और रूबाबा पणजी गए थे सत्संग में, वहां पाव भाजी खाई थी। फिर 3 अक्टूबर को वापस विजय और रूबाबा इफी आए थे, ये याद रखना। सर आप गुस्से वाली कोई मूवी बताने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजय सर, आप देवगन नहीं टॉप गन हो सर। एक ही बात बोलना चाहता हूं, आमी जे तुम्हार छिन 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 छू शुदू जे तुम्हार, लव यू सर, लव यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अब देखिए, मुझे फिल्मों से इश्क मोहब्बत और प्यार तब हुआ जब आप फूल और कांटे में 2 बाइक्स पर एंट्री मार के आए थे। इसलिए इफी के स्टेज पे मैं आपके साथ शपथ लेना चाहता हूं। सर आप रेडी हैं शपथ के लिए? डिपेंड करता है शपथ का है। नॉर्मल है सर। सामने लिखिए। पिछली बार नहीं। बहुत साल पहले एक शपथ ली थी। वो वाली शपथ नहीं है सर। सर सिंगम स्टाइल में हाथ आगे कीजिए सर। ये शपथ की गारंटी नहीं है, हाथ ही आगे किया है सर। मतलब ठीक है, इतनी गारंटी नहीं लेनी, बट हम शपथ प्लेज ऐसी चीजें कर रहे हैं, नॉर्मल सी है, ज्यादा इसमें कुछ ठीक है। चलो, ट्रांजैक्शन आरटीजीएस नहीं होगा हमारा।
हम कसम खाते हैं कि मरते दम तक फिल्मों के लिए जिएंगे। रिपीट करना है सर। मुझे रिपीट करना है? मुझे बोला गया आपसे रिपीट कराने की। इसमें कसम खाने की कोई बात नहीं है, नजर आता है। हाँ। आई थिंक हम फिल्मों के लिए ही जीते हैं और हम काम के लिए ही जीते हैं, अप्रिसिएशन के लिए जीते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करने के लिए जीते हैं और बाकी जो भी रिजल्ट हो, अच्छा बुरा, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस काम करते रहो। सुपर्ब है सर। सर एक और है, हम रोज सेट पर भी जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं सर। हर फ्राइडे नई कहानियां लेकर आएंगे, हम गोलमाल करके दुनिया को हंसाएंगे, भूल भुलैया करके थोड़ा डराएंगे। हम कसम खाते हैं टिकट के, पॉपकॉर्न के और समोसे के पूरे पैसे वसूल कराएंगे। हर फिल्म के साथ ऑडियंस को नया हेयर स्टाइल, नया डांस स्टेप भी सिखाएंगे और पंजी पे 2 अक्टूबर को पाव भाजी खाने जरूर आएंगे सर। हम शपथ खाते हैं, बस हो गया। जी सर। मैं फिल्मों में भी अपने डायलॉग कम कर देता हूँ। बट थैंक यू सो मच सर, यू हैव बीन एंटरटेनिंग अस अ लॉट एंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी हिट की जरूरत थी, जो अगेन दृश्यम 2 सर की फिल्म ने अभी अभी करा है। सो प्लीज प्लीज बहुत सारी तालियों के साथ इनके लिए। अभिषेक भी हैं, कुमार जी भी यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे दृश्यम के बारे में? नहीं, आई थिंक फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो अब फिल्म जब रिलीज हो जाती है तो उसके बाद हम बोलने लायक नहीं रहते, ऑडियंस बोलने लायक होती है। या तो जूते ऑडियंस ने जवाब दे दिया है। लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अपार शक्ति का हो जाए अजय सर के लिए एंड कार्तिक माय ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। जोरदार तालियां हो जाए कार्तिक आर्यन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। All right. The IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award honors the recipient's outstanding contribution to the growth and development of world cinema. And this year, it is being awarded to a very, very special personality. Reality and fantasy, dreams and memories flow freely into one another in the haunting, layered works of this genius. He is arguably the most important Spanish filmmaker to emerge ever. And today, he receives the IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Let's have a thunderous applause for Sir Carlos Suara. Let's play the AV. Ana, Antonio, por favor, Fernando, colócalos todos ahí. Todos, estás muy guapa. Anda, Ani. ¿Qué pasa? Natalia, una sorpresa. Silencio. ¿Qué será? Luz. Música. Te voy a poner la canción. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Nada, que te sonore está bien.
And I request Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur, and the Honorable Chief Minister, Goa, Dr. Pramod Sawant, to do the honors. And please come on the stage, sir, with our IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Ladies and gentlemen, I would now like to request Carlos sir's daughter, Anna Swara Rahman, to please come on the stage and accept the award on his behalf. Congratulations to you and your father. And of course, we have an acceptance speech via AV from Sir. If we can have a look. Bueno, pues buenas noches. Siento no estar, pero mi hija me representa, mi hija Ana. Y bueno, pues estoy todavía convaleciente de mi bronquitis, pero ya estoy mejor, ¿eh? Dentro de unos días estaré ya en perfectas condiciones para viajar, pero hoy no. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos, ¿eh? Y un abrazo muy fuerte al festival. Thank you so much, ma'am. Anurag sir, please stay on the stage, sir. Thank you so much, Pramod sir. Thank you so much. Congratulations one more time. And IFFI has become a platform which covers and appreciates a wide spectrum of national and international cinema, just like Jio's widest and best mix of 5G spectrum. And it gives me immense pleasure to announce the next honor, जो एक हस्ती को सम्मानित करने के लिए है, जिन्होंने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के जरिए इंडियन सिनेमा को एक नया आकार दिया है. This is the award for the Indian Film Personality of the Year. And can we please have the envelope? Anurag sir is going to announce. Very wild guess. And the award goes to Mr. Chiranjeevi. Whoa! Give it up for Chiranjeevi, sir. Let's, you know, what an amazing journey. And let's play the AV and listen to what he has to say. He's always an inspiration and a guiding force. He is an all-rounder in the mainstream cinema. ఒక్కొక్కటి సాధిస్తూ హిమాలయాల్ని తలదన్నే ఆయన వ్యక్తిత్వం ఎంత ఎదిగినా ఒదిగుండే ఆయన శక్తి. తెలుగు సినిమా మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ నేమ్ పద్మభూషణ్ మెగాస్టార్ డాక్టర్ చిరంజీవి. పొగరు నా ఒంట్లో ఉంటది, హీరోయిజం నా ఇంట్లో ఉంటది. సింహాసనం మీద కూర్చునే అర్హత అక్కడ ఆ ఇంద్రుడిది, ఇక్కడ ఈ ఇంద్రసేనుడు. Wow! Lajawab, bemisal, adbhut, magical, mesmerizing. All these words got a new meaning after he started adorning the screen, isn't it? With an illustrious career spanning almost 4 decades, he has been a part of more than 150 feature films. He has been honored with most coveted Padma Bhushan and the Raghupati Venkaiah Award, the highest award of Andhra Pradesh, the Nandi Award, amongst many, many others. He captured the imagination
of the masses with his performance in Entilo Ramayya Vidilo Krishnayya in 1982. He is admired for his zestful dance performances and fight sequences brimming with power. His influence has claimed him the title of a mega star. He is none other than and one and only Chiranjeevi. Ek baar zordar taaliyan ho jaye. Huge round of applause for Chiranjeevi sir. He's truly India's biggest treasure. Thank you, Shri Anurag sir, for doing the honors. And Murugan sir, thank you so much. Anurag sir, can we please have you on the stage to address the entire audience? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्री अनुराग सो ठाकुर जी के लिए. Yes, it's a good evening, sir. How are you, sir? Honorable Governor of Goa, Honorable Chief Minister, Honorable Union Ministers, Secretary INB, members of the Steering Committee, distinguished members of juries, His Excellency Ambassador of France and Ambassador of Spain, international delegates, friends from the world of world cinema and media. It's my privilege and honor to officially welcome you to the 53rd International Film Festival of India in Goa. The International Film Festival of India presents unique opportunities and incredible possibilities for young and established filmmakers to network, pitch, collaborate, and experience the best from the world of cinema. Cinema captures and chisels the conflux of a country's rich culture, legacy, heritage, hopes, and dreams, aspirations, ambitions, and most importantly, the collective conscience of its people at a given time in history. The concept and theme of IFFI is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, a phrase which embodies the essence, peaceful coexistence where the world is one family. In fact, India's rising global role and the presidency of the G20, जी हाँ, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी किसी और को नहीं, भारत को ये सम्मान मिला है, revolves around this theme of the one earth, one family, one future under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The 53rd IFFI is all set to be a melting pot of myriad vibrant cultures and spectacle of cinematic excellence. A whopping 282 films from 72 countries will be screened this year at the 53rd IFFI. 25 features as well as 20 non-feature films will be showcased at the Indian Panorama section from a broad spectrum of entries. This edition of IFFI has arrived on the shores of Goa, bringing with it the best of international cinema, along with a special section such as the Cinema of the World, International Competition, UNESCO Film Section, sections of retrospectives, homages, tributes, and children's films, amongst others. Similar to last year, where we initiated many firsts, we are continuing in that spirit with some more firsts that this film festival will witness. For the first time, IFFI will host gala premieres of Indian films, foreign films, and original series from OTT platforms with the featured stars who have especially come to support their films. In fact, the first episode of the 4th season of one of the most awaited drama series will also be premiering here at the 53rd IFFI. I will leave you guessing by only sharing that they are one of the Israel's biggest stars. और ये इज़राइल के बड़े सितारे जो OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत पॉपुलर सीरीज इनकी आई है, उसका अगले सीजन का प्रीमियर भी कहीं और नहीं, उनकी स्टार कास्ट के साथ गोवा में ही होने वाला है. It has been our vision that we embrace new age platforms such as OTTs and make them an inclusive part of the festival. Earlier this year, we celebrated the 75 long years of diplomatic relations with France, marked by a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron. And in another first, this was followed by India being
the country of honor at the Marshallu Films at the 75th Cannes Film Festival. जी हाँ, 75वां वर्ष कांस फिल्म फेस्टिवल का भी था, 75वां वर्ष भारत और फ्रांस के डिप्लोमेटिक रिश्तों का भी था, 75वां वर्ष भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव का भी था, और दुनिया को पहला सम्मान किसी देश को मिला तो हमारे भारत को कांस फिल्म फेस्टिवल में मिला. And continuing in this spirit, I am delighted to welcome France as the country of focus at the 53rd edition of IFFI. The French Republic is known for its rich and innovative film tradition and history. I extend my greetings to the French ambassador, Mr. Emmanuel, and filmmakers as part of the delegations to India. Further, for the first time, IFFI has augmented the scope of Film Bazaar by introducing country pavilions. I request all of you to please visit the new Film Bazaar. You can look at various film festivals across the world. Our Film Bazaar is as good as or maybe better than those marketplaces in any of the film festivals across the globe. In fact, they will also include state governments, industry players, ministers, apart from nations of the world. I invite you to explore over 40 pavilions, and that will be showcased at the 15th edition of Film Bazaar. Further, I'm delighted to share with you all that this year again, we have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and dynamic country, in its second edition, out of nearly 1,000 entries across 10 categories, such as direction, editing, playback singing, script writing, animation, acting, amongst others, 75 creative minds of tomorrow have been selected after a rigorous process by eminent jury comprising of lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners, and the selected 75 young filmmakers or the selected 75 filmmakers are seated among us today. Please put your hand together to welcome them. I welcome you all to IFFI to explore, experience and engage with the brightest minds in the industry. They represent 19 states. So these 75 representatives come from 19 states, coming from places like Jaintia Hills from Meghalaya, Lakhimpur from Assam, Khoda from Odisha, and so on. And the youngest among them is 18 years old. Yes, 18 years old. And my best wishes for your 53-hour challenge, and may the best film win. Moving on, I take great pride in highlighting that in this edition of IFFI, we will commemorate 50 years of Manipuri cinema by showcasing a specially curated package of notable feature and non-feature Manipuri films. The first Manipuri film was Matamgi Manipuri, and the film won the President Medal, Rashtriya Chalchitra Purushkar, at the 20th National Film Awards held in 1973. In another first, to make the festival more inclusive and accessible for everyone, we have made special provisions for specially abled. जी हाँ, दिव्यांगजन के लिए special प्रावधान भी किए गए हैं, keeping in mind their accessibility needs. The films in this section will be audio-visual equipped embedded with audio descriptions and subtitles. In line with our government's inclusive vision under the Honorable Prime Minister, I am also happy to share that the Film and Television Institute of India, popularly known as FTII, will be taking 2 special courses for specially abled. One basic course on smartphone filmmaking, curated by artistic individuals, and a basic course in screening acting, curated by wheelchair users. Moving on, I would like to take this opportunity to congratulate the winner of the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award,
for 2022, Mr. Carlos Sora from Spain, and I'm thankful that his daughter is here among us today. He's a great filmmaker, 93-year-old, but still, despite everything, his family has come all the way. We welcome them in Goa and thank you for making it. He's a master who has devoted his life to the art of filmmaking and distinguished himself as one of the greatest in the field of filmmaking, photography, and writing. I would also like to acknowledge Spanish delegation present here today and led by Mr. Carlos, President of the Spanish Film Commission, His Excellency, Ambassador of France, of Spain, and for those cinema lovers who can't make it, I am delighted to share that you must log on to our new website and explore Virtual-IFFI to attend master classes by industry experts, view in conversation sessions with industry leaders, watch film, etc. till 13th of December. And before I end, I would like to thank Mr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, for making arrangements here. His team has been doing a fantastic job. मैं सरकार को तो धन्यवाद देता हूं, अगर जनता ना आए तो कोई भी कार्यक्रम हो वो सफल नहीं हो सकता। आप सब ने आकर इस IFFI के 53rd एडिशन को सफल बनाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर आपको लगता है कि अगले वर्ष का जो 54th IFFI होगा उसमें क्या नयापन हो, क्या और जोड़ना चाहिए, क्या कुछ आप और देखना चाहते हो जो दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने सुझाव गोवा की सरकार को भेज सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रमोद जी जब गोवन कुजीन की बात कर रहे थे, गोवा कल्चर की बात कर रहे थे, गोवा सिनेमा की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अंदर से उनकी एक ही आवाज़ आ रही थी कि आइए और बार बार आइए, गोवा घूमने भी आइए, सिनेमा के लिए भी आइए, यहाँ की कला संस्कृति को देखने के भी लिए आइए। आपका नाम ही ऐसा है, गो मिस जाओ, आ मिस आजा, गो आ, तो आप जाने के साथ साथ आने का बुलावा भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है कि इसको कोई और रिप्लेस अब कर नहीं सकता। देश और दुनिया के फिल्म जगत में गोवा ने एक अपनी पहचान बनाई है और अगले साल हम इससे बड़ा और इवेंट लेकर गोवा में आएंगे और आशा करता हूं अगले साल आप आकर फिर IFFI की शान बढ़ाएंगे। देश और दुनिया के कोने से आए हुए सभी अपने फिल्म कलाकारों का, फिल्म निर्माता निर्देशक का मैं सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मित्रों, हमारे लिए अवसर है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते मनाते हम लोग अमृत महोत्सव से अमृत काल की ये यात्रा में अगले 25 वर्षों में भारत को दुनिया का फिल्म शूटिंग के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ साथ कंटेंट हब बनाने का काम करें। ये यात्रा जो हमारी अमृत काल तक की होगी, जहां हम अलग अलग क्षेत्रों में भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। आज ये संकल्प लेते हैं कि सिनेमा जगत में भी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। इस बात का संकल्प हम इस धरती से लेकर जाएंगे। ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता, ना केवल दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बनाने वाला देश, बल्कि दुनिया का एक केंद्र बिंदु फिल्मों को लेकर बने। चाहे वो मार्केट की बात हो, फिल्में बनाने की बात हो, ये सब संभावनाएं हैं। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है, शूटिंग की साइट्स की कोई कमी नहीं है। तो अपने ऊपर जो विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास जगा है मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक बार फिर सभी कलाकारों का, सभी फिल्म जगत की हस्तियों के साथ साथ गवर्नर साहब, CM साहब, यूनियन मिनिस्टर्स, फिल्म कलाकारों के साथ सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. One more time, give it up for Shri Anurag Singh Thakur for bringing the festival to life. So on the occasion of 75 years of independence, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Azadi Ka Amrit Mahotsav last year.
Since then, the central government, along with state governments and several governmental and non-governmental institutions, have undertaken thousands of activities. In April 2022, the Honorable Minister of INB, Youth and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, launched a series of 7 short videos to celebrate the inspirational stories and achievements of the women of today under Azadi Ki Amrit Kahaniyan, an initiative by the Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with Netflix. The second part of Azadi Ki Amrit Kahaniyan is being launched today on this platform of IFFI with short videos of 2 of the bravest leaders of the 1857 freedom struggle, Rani Lakshmi Bai and Veer Kunwar Singh. Now I request Honorable Governor Goa, Honorable Chief Minister, Honorable INB Minister to formally launch it. Sir, iPad आपके हाथ में है. Please button दबाइए. Please do the honors. जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। ये है उस वीरांगना की कहानी, कहते हैं जिसे झांसी की रानी। बचपन बीता संग खेल कृपाण ढाल कटारी, फिर राजा गंगाधर से ब्याह कर आई महल बन के रानी। हुआ राजा का निधन, सोचा सबने रानी बन जाएगी दासी। अवसर देख ब्रिटिश राज के फौजी पहुंचे द्वार झांसी। चंद्र तिलक माथे पर, हाथों में तलवार, साथ अपनी महिला सेना के किया जोर का वार। पुत्र दामोदर को कस लिया पीठ पर, दिया परिचय साहस का, लड़ी 7 दिन होके निडर। नहीं दूंगी अपनी झांसी, लगाई जोर की ललकार, आंच ना आने दी अपनी मिट्टी पर, अंग्रेजों की कोशिश हुई नाकाम। महीनों बाद अंग्रेज लौटे, फिर से धावा बोला, ग्वालियर में थी लक्ष्मीबाई, फिर उठा युद्ध का शोला। चारों ओर से घेरा दुश्मन ने, घायल हुई रानी, वीर गति को प्राप्त हुई वो नारी, वो मर्दानी। वीरता की थी वो साक्षात मूरत, थी स्वतंत्रता की मशाल जलाई। याद रहेगी हमेशा उनकी कहानी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। वाह, क्या बात है। आजादी की अमृत कहानियां। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। एक समय की बात है, थे एक 80 साल के जवान, नाम था वीर कुंवर सिंह, बुलाते थे उन्हें बिहार की शान। नेतृत्व के गुणों से भरपूर थे वो, धर्म जाति से पार, सभी वर्गों को एकजुट कर लड़े वो। हैरान थी ब्रिटिश सरकार। जगदीशपुर के थे जमींदार, पर कहलाते थे शाहबाद का शेर। जब लगाया अनुचित लगान, पाला उन्होंने अंग्रेजों से बैर। शुरू किया विरोध, पहुंचे दानापुर से आरा, रिहा कर भारतीय कैदियों को ब्रिटिश राज को दिया जवाब करारा। कायम रखी स्वतंत्रता की ज्वाला, बढ़ चले आजमगढ़ की ओर, और गुरिल्ला युद्ध नीति से विजय करी जीटी रोड। श्रीपुर घाट पहुंचे की शत्रुओं ने गोलियों की बौछार, गोली लगी हाथ पर, हुआ था जोर का वार। काट अपने हाथ को किया गंगा माँ को समर्पित, लेकिन जारी रखी जंग और किया अंग्रेजों को पराजित। लौट आए जगदीशपुर, वहीं लड़े वो और वहीं दी समाधि। तेगवा बहादुर थे वो, याद रहेंगे बाबू कुंवर सिंह, वीर फौलादी। 1857 की जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आजादी की अमृत कहानियां के लिए। क्या आपको पता है किसकी आवाज थी ये? Yes, absolutely. The golden voice, Padma Shri Manoj Bajpayee ji. Sir, may I please request you to please come on the stage. मैं आपको थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूं। कैसे हो सर? So मनोज सर, सबसे पहले ये जो आपने नरेट किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा था? We would all love to know. ये सबसे पहले हमारे नेटफ्लिक्स की तरफ से और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से मुझे ऑफ़र दिया गया और मैंने खुशी खुशी स्वीकार भी किया, क्योंकि बहुत सारे वीरों की गाथाएं हम जानते हैं, क्योंकि हम जिस तरह के क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह के स्कूलों में पढ़े लिखे हैं, जैसे कुंवर सिंह साहब हुए जी, बहुत सारे राज्य के लोग या बच्चे नहीं जानते होंगे, ये आजकल के बच्चे, लेकिन कुंवर सिंह जी की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है। और मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है मुझे कि कभी कभी कि हम लोग कभी कुंवर सिंह या ऐसे वीरों के बारे में हम लोग कभी फिल्म बना क्यों नहीं पाए या नाटक हम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि एक ऐसा वीर जिसे गोली लगी अंग्रेज़ों की तो अपना हाथ काट कर भी लड़ते रहे वो। तो इस तरह की गाथाएं, इस तरह की वीरों की, वीरांगनाओं की गाथाएं हैं और इनसे जुड़कर उसको बस अपनी आवाज़ दे करके ही हम काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। क्या बात है मनोज। तो मुझे लगा कि शायद एक छोटे रूप में ही सही उससे मैं जुड़ जाऊंगा और बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत मित्रता के तरीके से जो है नेटफ्लिक्स और सूचना प्रसारण के बहुत सारे दोस्त मित्र लोग, विक्रम जी वगैरह, सबने मुझे कांटेक्ट किया, संपर्क साधा, उसमें मुझे हाँ करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्या बात है मनोज सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज सर के लिए। मैं सबको एक बार बताना चाहता हूँ मनोज सर, एक बार दंगल के बाद मुझसे सवाल पूछा गया कि यार आपको मुश्किल नहीं आई, मतलब इतने वहाँ पे खतरनाक एक्टर, इतने बड़े सुपरस्टार आमिर खान के सामने इतना मतलब कॉमेडी कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उनको बोला मेरी स्कूलिंग ना मनोज सर के थ्रू हुई है, मैं उससे पहले आपके साथ काम कर चुका था, तो मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता है। तो मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्रिया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपके साथ वक्त बिताया है तो मैं जानता हूं कि आपकी हिस्ट्री को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, माइथोलॉजी को लेकर, हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपको। तो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दीज स्टोरीज, आजकल के युवा पीढ़ी को क्या इससे प्रेरणा मिलेगी और क्या, व्हाट इज द टेक अवे फॉर देम? The most important thing that is lacking now in our education system, that we stop talking about the people because of whom we found this freedom, because of whom the culture of this land has been glorified internationally and globally. Somewhere we always think that this is the time which is only true. This is the only time which is most glorified. This nation, this land has seen many glories like this, or more than this, okay? And we can only learn from, we can have much more, we'll feel much more proud if we know the true history or true story of all the brave people, all the glorious people of this land. Absolutely. Yeah. Please give it up for the real heroes. And thank you so much मनोज सर, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर। Thank you very much. Thank you so much sir. Thank you. Thank you so much. बहुत अच्छा बोलते हो यार। अरे सर आपसे सीख रहा हूँ सर। Thank you so much. Give it up for Manoj Bajpayee sir. Now, ladies and gentlemen, now it is my privilege to request our distinguished guests for the evening, Honorable Governor of the State Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai, to address the gathering. So I would request you to please come on the stage. Honorable Union Minister
great dynamic Sri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister of State for Information Dr. L. Murugan ji, Adaraniya Sripad Naik ji, Secretary Information and Broadcasting Abur Chandra ji, Chief Secretary of Goa Goel ji, other officials and veterans in the film field, members of the Entertainment Society of Goa, members of the international jury, eminent personalities from the film industry, our distinguished guests, and my dear friends. I'm extremely happy to participate in this function because regarding IFFI, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji already stated with respect to his objectives, and our Information Minister also gave the details with respect to the objective of IFFI. I would like to say that in 1952, second edition of IFFI, while it was inaugurating, Dr. Radhakrishnan, Sarvepalli Radhakrishnan, at that time declared that this is a golden opportunity for us to interact with the artists and filmmakers in the world. Then he, a philosopher seen by our country, he has stated that thirst for knowledge of India and its devotion should always be promoted through this process. And the Vishwaguru concept stated by our Honorable Information Minister, you see, as far as India is concerned, even after our independence in 1947 onwards, what type of importance we were giving to the artists? The artists are considered even above our protocol and power politics and other things. I am remembering one thing from history. When our Bharata Ratna awardee, that M.S. Sugalakshmi, is known to all of us. When our first Prime Minister in 1950s, there were a Carnatic music concert was there in Delhi, and they have not seriously invited the Prime Minister at that time. But when the program started, as an uninvited guest, the first person in the protocol, our Prime Minister at that time, was sitting in front of us among the audience. The organizers embarrassed, and everybody was wondered, and in an embarrassing situation at that time. Then press people and organizers and others asked the question to the first Prime Minister of India, what do you say about it? Then his answer, I would like to emphasize on that. The first Prime Minister of India, he answered, who am I? A mere Prime Minister in front of this queen of song. That is a tradition of our country, and our Prime Minister is concerned, President Narendra Modi ji is concerned. Sports sphere and art sphere, maximum importance our Honorable Prime Minister is giving. So as far as the purpose proclaimed by Radhakrishnan in his speech, he stated that two aspects. I just want to request your attention on that aspect. That two important objectives of IFFI, according to the inaugurator in 1952,
national integration and world solidarity. National integration plus world solidarity. These are the two important motive, objective declared by our Vice President at that time. We will all think about it. And national integration is concerned, I would like to say the most important role can be played by artists as well as literary figures. I can say one thing. In 1947, our country was divided. You just think about the artists at that time, singers at that time, poets at that time. If you take the stock of that, all the artists and singers went to Pakistan. 90% of them returned to our motherland within 2 or 3 years. This is the history, and I am not taking much of your time, but M.S. Subbulakshmi is concerned. She was a cure of Carnatic music, but at the same time, she was excellent in Shahanai. Shahanai is part of Hindustani music, but South Indian Carnatic music, as far as that field is concerned, she was expert in Shahanai. In our Muruganji's state, M.L. Vasanta Kumari, she was very expert. South Indian musician, belonged to Carnatic music, but she was an expert in Rudra Veena. So this is the tradition of our country. That is why national integration is concerned. We have a duty, and I am not finding fault with anybody, but bear it in our mind. Our country is moving fast in all fields of life. You see, our Indian people, Indian origin people, you take any country in the world now. In UK, I am remembering one aspect. Winston Churchill once told the world that Indian people are not competent, they are not able to rule, so not to give freedom to them. But now, a person who swear by touching Bhagavad Gita is the Prime Minister of UK. For the information of Goan people, I would like to say, the Prime Minister of Portuguese, his origin is from Goa. You take the case of Vice President of US, and Indian origin madam is the Vice President of US. That in a certain time, my state, Kochi was ruled by them. Dutch people, in Dutch parliament, now 2 or 3 Indian origin people are there. Yesterday, 2 days back, Indonesia, Bali, 92% of the population in Indonesia belongs to a particular community, and they are having only one God. Their commitment to one God. But you see, what is the name of the airline? Garuda Airline. What is the name of the bank? Kubera Bank. And what are the names of certain cities there? Bali and other things, Padaliputra and other things. I am not going to the detail. So, our information minister stated that we are fast running to Vishwaguru concept. Once upon a time, all European countries were in dark days. People are coming to our country for getting education and knowledge.
So such a great country, once upon a time, about 500 years back, our country's name was Ratna Garbhayam Bharat, richest country in the world. Now, persistent effort on the part of our country to come up again to the stage. And according to me, Natya Shastra 64 items are there. If you closely analyze it, drama is there, Nadaga also, drama is there, film is also interpreted as part of that 64 Natya Shastra items of our history. I am requesting all should bear in mind we can achieve our goal. The Vishwaguru concept is declared by Swami Vivekananda. Our Vivekananda dreams are going to be true within short time. I am requesting your cooperation. I wish this IFFI 53 all the best, and artists are concerned. I am wishing all the best for you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Goa. Thank you so much, sir. Okay, now it is time to meet the man behind this mammoth festival. He turned days into nights and nights into days to make Asia's biggest international film festival this exciting. Please welcome on the stage the festival director, MD NFDC, Sri Ravinder Bhakar. How are you, sir? Namaskar. Good evening, everyone. Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan, Honorable CM, Sri Pramod Sawant, Honorable Union Minister, Sri Anurag Thakur, Minister of States, Sri Murugan Saab, Sripad Nayak ji, our Secretary, Sri Apurva Chandra, Chief Secretary Goa, all the steering committee members and the technical committee members, the distinguished jury members, and all my friends from the media, and all who have contributed in different walks of life to kickstart today's IFFI proceedings. I have been given the opportunity and the responsibility to give vote of thanks on behalf of everyone and to everyone. I acknowledge the presence and contribution of all, and I am extremely thankful you all are here with us in such a large number. I am extremely thankful to our two visionaries, our Honorable Union Minister, who gave us vision to scale up the festival this time. And our team has put in days and nights efforts to make it bigger and bigger. Our other two key principals, Secretary Sir and the Chief Secretary Goa, who held us together throughout this festival period. I'll not take much of time. Already we are running behind the schedule. I thank you all, everyone who have come in such a large number to inspire us, to encourage us and support us. Thank you. Jai Hind. 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का ये शानदार आगाज उम्मीद जगाता है कि आने वाले समय में भारत यूं ही विश्व सिनेमा में अपने सफलता के परचम लहराता रहेगा। आप सभी का इस फिल्म समारोह का जो आगाज है, जो जितना शानदार है, भविष्य की उम्मीदें उतनी ही उज्जवल है, बेहतरीन है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।